Hello, good afternoon, everyone. So once again, we are going to start our paper discussion for NDA pattern for NDA coming September 14. So this is one of our guest paper. So we are going to solve each question one by one. You can see here. Like here it is. The first question, if you go through, it is written if set A and B has respectively 4 and 2 elements, what is the ratio of number of proper subset of A to the number of relation from set A to set B? Okay, so we are trying question number 1 here. Set A, that means number of element in set A is given as 4 and number of element in set B is given as 2. Right. Now what is the ratio of the number of proper subset? So how to calculate the number of proper subset? So we can say that number of proper subset of A will be given as 2 raised to power 4 minus 1. Why minus 1? Because for proper subset we need to subtract 1, that is the one which is exactly equal to the original set. That subset you need to subtract it. So we are going to get here 10. Okay. And similarly, second part they are saying that number of relation from set A to set B. So the number of relation from set A to B. How to calculate the number of relation? 2 to the power m into n, that means 4 into 2. So this is equal to 2 to the power 8. 2 to the power 8 is equal to 250. So they are asking us the ratio. Therefore, the ratio between the two will be equal to 15 dividing it by 250. How much you are going to get? We cannot cancel it out because 15 is divisible by 3 and 5, while 256 is an even number. It is neither divisible by 3 nor divisible by 5. So this will be your answer. You can check the option. Option A is matching. That is answer. Okay, fine. Similarly, moving to question number 2. If x plus 3 whole raised to 3 plus 27 is equal to 0, has 3 roots, x1, x2 and x3. And then the value of x1 cube plus x2 cube plus x3 cube they are asking us. Okay, fine. So we need to find out the 3 roots, then it will be easier to solve it. Okay, so let's see. They have given the condition as x plus 3 whole raised to 3 plus 27 is equal to 0. Fine. And they are saying that it is going to have 3 roots. And then accordingly you have to find the cubes of each and every one. So if you try to solve it, we are going to get x plus 3 whole raised to 3 equal to minus 27. Okay. And minus 27 can be written as minus 3 whole raised to 3. Fine. And x plus 3 whole raised to 3 equal to 3. We got this one. So if you cancel this cube here, you are going to get x plus 3 equal to minus 3. So x will be equal to 3 plus 3, that is 6. If you take this as one of the option, minus 3 into 3, 9 into 3, 27, and then x plus 3 whole raised to 3 is there. If you cancel out this cube, minus 3 will be getting minus 6 here. Okay.
If one of the option we got for x as -6, now what they are asking is x1 cube plus x2 cube plus x3 cube. Okay. This is the question which they are asking us to find the value. Okay. Now, if one of the root we have already got as x is equal to -6, then rest two roots we need to find out. Then only we can be able to find out the cubes of each of the three roots. So going through the main equation, just simplify it. A plus b whole cube. What you are going to get? A cube plus b cube plus 3ab. That means 9x, and in bracket we will be getting a plus b plus 27 equal to 0. So this is equal to x cube plus 27 plus 27 will become 54 plus 9x square plus 9 into 3, 27x equal to 0. Okay. So again, coming to the next step, x cube plus 9x square plus 27x plus 54 equal to 0. This is the complete cubic equation which they have given. Now, one of the roots we are already having. So going through the, you can say synthetic division to find out the other two roots. We can apply here synthetic division. Like one of the root is -6. So I am dividing with this -6 to this cubic equation by synthetic division. Okay. 1, 9, 27, and then 54. Okay. And this one here as it is, -6 into 1 is -6, 9 minus 6 is 3, -6 into 3 is -18, 27 minus 18 is 9. Okay. Okay. Sorry for the interruption, students. We can continue with the question. So -6 into 9, we can write here -54. Here we are going to get 0. So next we can write it like these 1, 3, 9 are the coefficients for the quadratic equation. So we can write it like this: x square plus 3x
plus 9 equal to 0. We will get the other two roots from here because one root we have already earlier only. Finding the other two roots from here, we can see that it is x square. Then the two roots will be, if you check that discriminant value, it is 3 square, it is 9, minus 4, it is negative, right? So d value is negative, so the other two roots are going to be imaginary. Roots are imaginary. Okay, what will be the value? X2 or x3. The other two roots we can calculate like this: minus b plus minus root under b square, that is 9 minus 4 into n to c, that is 36 upon 2a. So this will give you minus 3 plus minus root under minus 27, that means 3 root 3 iota upon 2. Okay. So now we got all the three roots here. We can say the three, therefore the three roots are minus 6 comma minus 3 plus minus 3 root 3 iota by 2. These are the three roots. When you will see the addition of these three roots, x1 plus x2 plus x3, this is going to give you minus 6 and minus 3 by 2 into 2 into the into c. Then we will add all these three roots. So what we are going to get? What we will be getting? Minus b plus minus root under b square minus 4 into n to c divided by 2a. So minus 3 plus minus 27, that means 3 root 3 iota by 2. So we will be getting these three roots. So summation, if you get, if x1 plus x2 plus x3 is 0, so we can say that a cube plus b cube plus c cube equal to 3 times of abc. So 3 times of x1 into x2 into x3, like this. So your answer can be 3 into minus 6 into x2 and x3 value, when we will see minus 3 plus minus 3 root 3 iota by 2. What you are going to get here, 3 into minus 6 is minus 18 into a plus b into a minus b, that means a square minus b square. So you will be getting minus 3 by 2 का whole square minus 3 root 3 iota by 2 का whole square. A square minus b square. Take it in bracket. What value you will be getting? So your answer will become minus 18 into, it is 9 by 4 minus
Iota square will become plus 27 by 4. So minus 18 into 9 plus 27, 36 by 4. 9. 27 plus 9 is 36. 36 by 4 is 9. 18 into 9 will be equal to how much? No, or 162. So if you check the option given in question number 2, so option C is matching with this answer. So option C is correct. Okay. हेलो सर, आपको फोटो भेजा है मैंने, सॉल्यूशन है करो आपका। ठीक। Okay. We can also have an alternative to this question number 2. For solving this question in less time. See, what all data they have given, we can write it like this. Our first equation is given as x plus 3 whole raised to 3 plus 27 equal to 0. Fine. So finding all the three roots, x plus 3 whole raised to 3, if we write it like this, minus 27, so x plus 3 whole raised to 3 minus 3 whole cube. So one of the root will be minus 6, no doubt. X plus 3 equal to minus 3, so it can be written as x equal to minus 6. For finding the other two roots, since it is a cubic equation, so other two roots we can take it as, for other two roots earlier only we got that it is imaginary roots, so that other two roots will become x1, we can take it as other two roots will be given as minus 3 omega and minus 3 omega square. Because the values also you can match, minus 3 plus minus 3 root 3 iota. If you take minus 3 common from there, you are going to get omega value only. Okay. So if these three roots are there, then the question will become very easy to solve. So if they will ask you to find, if you find out x1 cube, we will be getting minus 3 cube, that is equal to minus 216, like this. If you find out x2 cube, so it is equal to minus 27 in bracket 1 plus omega whole cube minus 27 minus omega square whole raised to 3, that is equal to 27. If we find out x3 whole cube, minus 27 in bracket 1 plus omega square whole raised to 3. So that is equal to minus 27 in bracket minus omega whole raised to 3, and that is also equal to 27. So when you will add all these values, x1 cube plus x2 cube plus x3 cube minus 216 plus 54, that is equal to minus 162. So option number B, we can take option B. Okay, moving to question number 3.
They have given some Tn equal to sin raised to n theta plus cos raised to n theta. Then you have to find the value of T100 minus T98, T98 minus T96. Okay. So find out as Tn they have given as sin raised to power n theta plus cos raised to power n theta. So they are asking you the value of T100 minus T98 whole divided by T98 minus T96 like this. So if you put the values for n as 100, you are going to get sin 100 theta plus cos 100 theta minus sin 98 theta minus cos 98 theta all divided by again sin 98 theta plus cos 98 theta minus sin 96 theta minus cos 96 theta. ठीक है. You can take common in the numerator. Sin 98 theta, you will get in bracket sin square theta minus 1. If you take cos 98 theta common, in bracket you will get cos square theta minus 1. All divided by, if you want to take in the denominator common as sin 98 theta, you have to take 96 theta common. In bracket you will get sin square theta minus 1, and if you will take cos 96 theta common, in bracket you will get cos square theta minus 1. So you are going to get sin 98 theta 1 minus sin square theta minus 1 will be minus cos square theta. Similarly, here also you will get minus sin square theta cos 98 theta into sin square theta all divided by sin 96 theta. Sin square theta minus 1 will be minus cos square theta. Again minus cos 96 theta multiply with sin square theta. So what more common we can take in the numerator? Minus sin square theta into cos square theta. In bracket we will get sin 96 theta plus cos 96 theta all divided by minus sin square theta into cos square theta in bracket sin 94 theta plus cos 94 theta. So you can say that this sin square theta, cos square theta, and minus minus will also cancel out each other. What is left is T96 upon T94. So your option will become C. Option C is your correct answer. Okay. This is question number 3 done. So we are moving to question number 4 now. If alpha and beta are the roots of the equation, some quadratic equation they have given, then the equation whose roots are alpha cube plus beta cube and alpha square plus beta square will be what? Okay. So they have given some quadratic equation as x square plus 3x plus 1 equal to 0. Okay. So by relation of the roots with its coefficients, sum of the roots, that is alpha plus beta, can be written as minus 3, and alpha into beta we can write as 1. Fine. Now what they are asking is alpha cube plus beta cube and also alpha square plus beta square. So what is the formula of alpha cube plus beta cube? Alpha plus beta into, it would be better if we find alpha square plus beta square beforehand only. Just squaring alpha plus beta
to both sides, what we will be getting? Alpha square plus beta square plus 2 alpha beta equal to 9. You can use the value of alpha beta as 1. So alpha square plus beta square will be equal to plus 2 equal to 9. So alpha square plus beta square equal to 7. Okay, okay, let it be. Also, we need to find alpha cube plus beta cube. So what is the formula for alpha cube plus beta cube here? Alpha cube plus beta cube is equal to alpha plus beta into alpha square plus beta square minus alpha beta. Use the values from above. Alpha plus beta is given as minus 3. So minus 3 multiply with alpha square plus beta square is 7 and alpha beta is 1. Okay. So minus 3 multiply with 6 is equal to minus 18. Now the question is, you have to find out the equation whose roots are alpha cube plus beta cube and alpha square plus beta square. So new sum of the roots will be equal to alpha cube plus beta cube plus alpha square plus beta square. So its value is minus 18 plus 7. So that is equal to minus 11. And product of the roots, alpha cube plus beta cube multiply with alpha square into beta square, alpha square plus beta square. So the values are minus 18 into 7. 18 into 7 is equal to minus 126. Okay, so the equation will become, therefore quadratic equation x square minus minus plus 11x minus 126 equal to 0. So your option will become B is the correct answer if you see in the options. X square plus 11x minus 126 will be equal to 0. Okay. Okay, this is question number 4. Moving to question number 5, students. What they have given in question number 5? If combination 30 comma p plus 2 equal to combination 30 comma p plus 6. Fine. Okay, just write down. They have given 30 c p plus 2 is equal to 30 c p plus 6. So there is one property for combination. If this kind of equation exists, then it means p plus 2 plus p plus 6 must be equal to 30. It means 2p plus 8 equal to 30. So 2p equal to 30 minus 8, that is 22, and p equal to 22 by 2, that is 11. Similarly, second part they have given that 50c q plus 3 is equal to q plus 5, sorry, q plus 5 is equal to 50c q plus 7. Again, we will apply the same property, q plus 5 plus q plus 7 equal to 50. So it will be equal to 2q plus 12 equal to 50. So 2q equal to 50 minus 12, that is 38, and q equal to 90. Now they are asking you to find out the value of p square plus q square. Now
According to question, they are asking you to find the value of p square plus q square. That means 11 square plus 19 square. 11 square is 121 and 19 square is 361. When you add both of them, you are going to get 482. Option number C, you can take. Fine. This is question number 5, students. We are moving to question number 6. If Sn denotes sum of n terms of an AP, where Sn is equal to 2n square plus 3n, then the value of T9 plus T7 upon T5 minus T3 will be what? Okay, fine. Write down the question. Sn is equal to 2n square plus 3n. So, from here, by seeing this equation for Sn, we can say first term will be equal to 2 plus 3, that is equal to 5, and its common difference will be equal to 2 into 2, that is 4. Now they are asking us to find the value of T9 plus T7, dividing it by T5 minus T3. So T9 can be written as A plus 8D, that means 5 plus 8 into 4, again plus 5 plus 6 into D, dividing it by 5 plus 4 into D plus 5 plus, sorry, denominator it is minus. So I will write it in bracket. 5 plus 2 into 4. So what answer we are getting? 5 plus 8 into 4. 32 plus 5 plus 24, dividing it by 5 plus 16 minus 5 minus 8. So 5 and 5 can cancel each other. 5 plus 5 in the numerator, we are going to get 10, 32, 24. 66 upon 8. So when you will cancel it by 2, you will be getting 33 by 4. So your answer will become 33 by 4. Which option it is? If you see the option, it is A. Okay, we are moving to next question. Question number 7. Okay, let me show the question clearly. Okay, don't worry, I will write the question for you. Question number 7 is, they are asking the value of limit where x tends to 0 and tan square 7x minus tan square 3x is there, all divided by tan square 5x minus tan square x is there. Okay, fine. So this can be solved by, there is one formula for limit that tan x by x becomes 1 if x tends to 0. Here also tan 7x is there, but with a square is there. So we will try to make it in that form. That is tan 7x upon 7x into, write it as a whole square. Then to balance it, we have to also give a 7x square here. Minus tan 3x upon 3x whole square into 3x whole square, all divided by
tan 5x upon 5x whole square into 5x whole square is there. Then again minus tan x upon x whole square into x square is there. So this can be written as, so limit is also there, limit x tends to 0. See, you are only left with 7x whole square, that means 49x square. Just write down once, 7x whole square minus 3x whole square all divided by 5x whole square minus x square. So this can be written as 49x square minus 9x square dividing it by 525x square minus x square. So it will become 40x square upon 24x square. X square will cancel out each other. 40 and 24 will also get cancelled out. So you are going to get 5 by 3. So your option will become D. Option D. Okay. And see question number 8, student. Yes, it is there. Question number 8. I'm also writing for you. They have given some differential equation. Y dx minus x dy is equal to xy square into dy plus y cube into dx. Okay. Just divide both sides by y square. Divide both sides by y square. So we will get like this, y dx minus x dy upon y square equal to x dy plus y dx. So if you see carefully, it becomes x by y, d of x by y, this one, and this becomes d of x into y. After this, you need to integrate it. So d and integration will cut out each other. So you will be left with x by y, xy plus c. So its option will become, correct option is D. Option D. Okay. You can see question number 9 after this. Question number 9 is given as 4x plus 5y minus 30 equal to 0 and 5x minus 4y minus 17 equal to 0 are the two equations of diagonals of a square. Okay. A square has one vertex is minus 10, 2. Find the area of the square. So, first of all, we are going to find out the intersecting point of the two diagonals. Okay. Intersection point of two diagonals. Point of two diagonals. The equations given are 4x plus 5y minus 30 equal to 0, and second equation they have given
5x minus 4y minus 17 equal to 0. Okay. This is equation number 1. This is equation number 2. Multiply equation number 1 with 5 and equation number 2 with 4. Okay. So what value you are getting? Just see. We will be getting 220x plus 25y minus 150 minus 150 equal to 0. And when you multiply with 4 to the second equation, again you are going to get 20x minus 16y minus 68 equal to 0. When you will subtract it, minus plus plus, what you will get? We will be getting here 25 plus 16 as 41y minus 150 plus 68 as minus 82 equal to 0. So y value is equal to 2. Okay, as you got y value as 2, putting y equal to 2 in equation number 1, we get 4x plus 10 minus 30 equal to 0. It means 4x minus 20 equal to 0. This implies that x is equal to 5. Okay. So meeting point of diagonal is 5, 2. You can directly draw the diagram and understand it. For a square they have given, we will draw a diagram for a square like this. Okay, I will join this diagonal. And this is my another diagonal. Okay, so they have already given one of the points or one of the vertex as minus 10, 2. Let it be this one. And just now we have find out the meeting point of diagonals as 5, 2. Like this. Name it as A, B, C, D. And this one as P. Okay, now finding the distance AP. AP will be equal to 2 and 2 are going to cancel out each other. You will directly get 5 plus 10 whole square. And under root of this. That is equal to 15. You will be getting AP as 15. Okay. You will cut out each other 5 plus 10, 15. Okay, fine. So if half of the diagonal is 15, it means this is 15, this is also 15, it means this will be 15 root 2. Therefore, area they were asking, area of the square will be equal to side square, that means 15 root 2 whole square, and that is equal to
225 into 2, that is 450. So option number C will be your correct answer. Option C. Fine. Okay. Moving to question number 10. In a lottery of 20 tickets numbered from 11 to 30, 3 tickets are drawn simultaneously. What is the probability that all the 3 numbers are prime number? All the 3 numbers should be prime number between 11 to 30. How many prime numbers are there between 11 to 30? 11, 13, 11 also we can take 11, then 13, then 17, 19, 23, and then 29. Total 6. Therefore, probability will be equal to, out of this 6, we have to select any 3. So 6 C3 upon 20 C3. So if you solve it, 6, 5, 4 upon 20, into 19 into 8. Okay, just see. 5 into 4, 20. This 20 will cut out. 6, 3. 19 into 3 is 57. 1 upon 57. So option number A. Option A is the correct answer. Okay. Okay. Moving to next question number 11. Function f of x mod x square plus x raised to 4 will be what? What kind of function it is? See, it is a very simple question. There is nothing in this question. Just they have given f of x is equal to mod x plus x square plus x raised to 4. And just they are asking you to check this function is even odd or neither odd nor even or both even or odd. What is the how to check? Just put x equal to minus x to check. What you will get? F of minus x will be equal to minus x whole mod plus minus x whole square plus minus x whole raised to 4. We are going to get mod x plus x square x raised to 4. So f of minus x equal to f of x, and this is the property of even function. When f of minus x equal to f of x, this implies f of x is an even function. Okay, so option A. Okay, next question. Question number 12.
ऊपर आओ ना, 1 मिनट नंबर पे, थोड़ा स्क्रीन पे प्रॉब्लम है कुछ आओ। Total number of terms in the expansion of this will be what? Okay, they are asking you total number of terms. Just write the equation x cube plus 6x square plus 12x plus 8 whole raised to power 5 plus they have given y cube. ये स्क्रीन पे कुछ दिक्कत है? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप चलेगा। We have y cube plus 9y square plus 27y plus 27. Okay, and whole raised to power 6 they have given as question. Okay, fine. So see, this is a cube is there. Also you see there 8 is there. Write that 8 as 2 cube. Then this value can be written as 3 into a into b square, 3ab square. That means 2 square plus 3 into a square into b. This is also one of the term into b. That means 6x square. And this is the formula for a plus b whole cube. Okay. Again, y cube is there, 3 cube is there, plus 3 into y into 3 square is there, plus 3 into y square into 3 is there. Like this. So this becomes a plus b whole cube plus y plus 3 whole cube. Power is 5 and here power is 6. Okay. So also you have to give power as 5 here and power as 6 here. So it becomes x plus 2 raised to power 15 plus y plus 3 whole raised to power 18. So now the number of terms becomes easy. For any binomial expansion, if the power is 15, so number of terms will be equal to 1 more than the power, that is 15 plus 1, 16, plus from here you will get 19, but also you have to subtract 1. Why? Because there will be two constant terms in this expansion, so those constants will become same while adding. That's why you have to subtract 1. So 16 plus 19 plus 1, how much it will become? 34. Your option will be, if you see the question, 34. You should, option A will be the correct. There will be a correction. Okay, option A, 34 should be the correct answer. Write down question number 13, students. A man has 7 friends. In how many ways he can invite 2 or more than 2 friends for a party? Okay. See, a man has 7 friends.
So he has to invite two or more than two friends, right? Invitation is more than 2 or equal to 2. So it means the solution will become number of ways, write like this. Total 7 are there, so it will be 7C2 plus 7C3 7C4 plus 7C5 plus 7C6 plus 7C7. Okay. So how to solve this one? Find out the overall answer. So we can do one thing. Add and subtract 7C0 plus 7C1. This part plus also you have to do and minus also. Minus plus 7C0 and 7C1 to rest of the parts. This part we are going to add to the remaining values. That is plus 7C2 plus 7C3 plus 7C4 plus 7C5 plus 7C6 plus 7C7, like this. So this is equal to minus of 1 plus 7 plus this value will be equal to 2 raised to power 7. Okay, that is equal to minus 8 plus 2 raised to 7 will be equal to 128. 128 minus 8 is equal to 120. So 120, option number D you can take. Okay, question number 14 now. One root of the equation is square of the other root, then which one is true? Fine. For any quadratic equation, x square plus ax plus b equal to 0. They have given, and they have also said that one of the root is square of the other. That means alpha and alpha square are the two roots. Okay. So you know sum of the roots. Alpha plus alpha square is equal to minus a, and product of the roots, that means alpha into alpha square equal to b. This can be written as alpha cube equal to b. Now cubing both sides to this equation, we are going to get alpha plus alpha square whole square equal to whole cube, minus a cube. It means alpha cube plus alpha raised to power 6 plus 3 alpha cube in bracket alpha plus alpha square is equal to minus a cube. This can be written as now alpha cube can be replaced with b. This is b square. This is 3b and this is minus a equal to minus a cube. It means b plus b square minus 3ab equal to minus a cube. Fine. They are asking you the ratio of a by b. So if we take b common from
this whole of the expression. Or just let b take common like this, d plus 1, and right side you can take 3ab and minus aq like this. Take a common from here, you will get 3b minus a square, and this is b in bracket b plus 1. So a by b they are asking. If you find out a by b, then you are going to get b plus 1 upon 3b minus a square. So this is your correct answer, and option number B. Option B is correct, and in option number B also correction will be there. This will be the correct answer. You can make the correction that it will be 1 plus b upon 3b minus a square instead of a square minus 3b. Okay. So after question number 14. Okay. After this question number, we are moving to question number 15. What they have given, a binary number is represented by A, B, A, C, 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 D, C, C. Okay. 2, where A is greater than B and C is greater than D. We have to find out the decimal equivalent for this. See, in binary numbers, we use 0 and 1 only. Okay. So it's equivalent. That means A, B, A, C, A, C, D, C, C. It will become 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. Okay. This number we are going to convert to decimal number. Okay. So it will become 1 into its decimal equivalent will be 1 into 2 raised to power 0 plus 1 into 2 raised to power 1 plus 0 into 2 raised to power 0 plus 1 into 2 raised to power 3 plus 1 into 2 raised to power 4 plus 1 into 2 raised to power 5 plus 0 into 2 raised to power 6 plus
So it will be 1 plus 2 plus 8 plus plus 16 plus 32 plus 128. When you will add all these values, you are going to get 187 to the base 10. So if you check the option, it is option number B. Okay, option B is your correct answer. Fine. Moving to question number 16 now. If A is equal to 3 plus cos raised to power 4 theta minus cos square theta, which one of the following is correct? It means they are asking according to the option. If you see, they are asking you the maximum and minimum value. So first we will try to solve it. So here we can write it like this. Take cos square theta common from here. In bracket we will get cos square theta minus 1. So now 3 plus cos square theta minus 1, by identity it is minus sin square theta. So minus cos square theta into sin square theta. It can be written as 2 cos theta into sin theta. Write down 2 sin theta into cos theta whole square divided by 4. That means 3 minus sin square 2 theta upon 4. So if you want the maximum and minimum value for this, put the value of sin theta. Square minimum value is what? 0, and its maximum value will be 1. So if you put 0 here, 3 minus 0 by 4, like this. 3 minus 0 by 4 is greater than equal to 3 minus 1 by 4. It is equal to 3 11 by 4. So 3 to 11 by 4. Oh, its minus sign is also there. Sin square 2 theta with minus sign is there. So you have to change the sign here. Okay. Okay. So option number A is matching. You can take option number A. Okay. See question number 17. They have given some quadratic trigonometric equation cot 3a minus cosec 3a. What will be the value for this? Okay. So just try to solve it. Cot 3a minus cosec 3a. Cot 3a can be written as cos 3a upon sin 3a minus 1 upon sin 3a. Okay. This is the trigonometric ratio for cot and cosec. Taking denominator common as sin 3a, we can write in the numerator as cos 3a minus 1 upon sin 3a. So, in the numerator, if you take minus 1 common, it becomes 1 minus cos 3a upon sin 3a. What is the formula for 1 minus cos 3a? 2 sin square theta by 2. That means 2 sin square 3a by 2
dividing it by sin 3a. Half angle formula can be written as 2 sin 3a by 2 into cos 3a by 2. You can cancel this 2. Sin can be cut out like this. So we are going to get minus tan 3a by 2. If you check the options for this, so the option number B is the correct answer. Okay. So you can tick on option number B. Moving to question number 18 now. They have given ABC are some positive number. Okay. ABC are some positive numbers. Okay. What they are trying to ask, we have to find a plus b plus c in bracket 1 by a plus 1 by b plus 1 by c, and all are positive. The options are given like the minimum value for this. So since they have already given that ABC should be positive number, we can take, let us take the minimum positive value for A equal to B equal to C as 1. We will check what answer we are getting. If all the values we are taking the minimum positive number as 1, so we will be getting 1 plus 1 plus 1 multiply with 1 by 1 plus 1 by 1 plus 1 by 1, that is equal to 3 into 3, that is 9. So the minimum value what we can get if all the three positive is 9. So in the option, if you see, they have given greater than or equal to 9. So you can take option number A for this. Done. Moving to question number 19. If the ratio of geometric mean to arithmetic mean between two numbers A and B is 2:3. Okay, they have given geometric mean to arithmetic mean ratio as 2/3. Then the value of A is to B we have to find. So we know the formula for geometric mean, root AB, and arithmetic mean is A plus B by 2 to 2/3. You can take this 2 to numerator, 2 root AB upon A plus B equal to 2/3. We can cut this 2 from numerator. So we got root AB by A plus B. Just reciprocal it. What you will get? A plus B by root AB equal to 3. So divide it. You are going to get, or if you do, you have to find the ratio for A and B. A plus B they have given, root AB they have given. Okay, just divide it. You will be getting root under B by A plus root under A by B plus root under B by A equal to 3. Fine. So let root under A by B as y. So the equation will become y plus 1 by y equal to 3, y square plus 1 equal to 3y, y square minus 3y plus 1 equal to 0. Plus 1 equal to 0. Now, by quadratic formula method, minus b plus minus root under b square minus 4ac upon 2. So this is
equal to 3 plus minus root 5 by 2. And since y is a root value, we have to take only positive value. Therefore, y we have taken as root a by b, that will be equal to be equal to 3 plus root 5 by 2. But also we have to do the squaring on both sides. Therefore, after squaring, we will get a by b as 3 plus root 5 whole square by 4, that is equal to 9 plus 5 plus 6 root 5 upon 4. 9 plus 5 is how much? 14 plus 6 root 5 by 4 squaring. So when you take 2 common, you are going to get 7 plus 3 root 5 by 2. Which option it is matching? A. Fine. So option A is the correct answer. Okay. Moving to question number 20. Students, see what they have given. They have given the inverse of A is equal to PQRS. Then what is the value of PQ plus RS? Some matrix they have given. A is equal to 2 minus 5 minus 1 and 3. For inverse, they are asking you the question. So what is the value of A inverse? Determinant value of A. That is 6 minus 5, it is 1 only. So by just interchanging the diagonal elements and changing the sign for non-diagonal elements, we are going to get 3, 5, 1, 2 as the inverse. And that is they have given is equal to PQRS. PQRS. So when you will compare it, according to the question, they are asking now PQ plus RS is equal to 3 into 5 plus 1 into 2. 15 plus 2, that is equal to 17. So option D is the correct answer. Okay, moving to next question. Question number 21. If P is equal to sin theta plus tan theta, then the value of under root PQ will be equal to what? Okay. Find under root PQ plus P minus 1 whole cube plus P minus 2 whole square plus 4. They are asking this. Put theta equal to 0. What value you will get? P value will become sin 0 plus tan 0, that is 0. Okay. Now, if P value is equal to 0, it means 0 plus minus 1 whole raised to 3 plus minus 2 whole raised to 2 plus 4. What value you will get? Minus 1 plus 4 and plus 4.
it is equal to 8 minus 1, that is root under 7. In the option they have given 1, 3, 5 or 7. Okay, we can check for some other degree. If suppose we are taking common, then it will become 1 plus. If we try to solve this p, what we will be getting, because option it is not matching, we can check once again. If we take sine theta common in bracket, we will be getting 1 plus 1 by cos theta. Right? So if you solve it, you are going to get cos theta plus 1 upon cos theta like this. So it will become sine theta 1 plus cos theta can be written as 2 cos square theta by 2 and upon cos theta. So sin theta by cos theta we can make it as tan theta. Tan theta multiply with 2 cos. Tan theta into 1 plus cos theta. So how we can apply it? Okay, this will be also going to be a lengthy method. So in order to solve this question in a short method, let's put the value of theta equal to 30 degree can also be put, 60 degree also, and 45 degrees also there. Or if you put 60 degrees, suppose, what you will get? P value will be equal to tan 60, that is root 3 into 2 into cos 30 is equal to root 3 by 2 square will be equal to 3 by 4. So you are going to get 3 root 3 by 2. I think root 7 will be the correct answer. This is okay. Just make a correction in the option. Option number D, root 7. Okay, this will be fine by putting the value of theta as 0. So moving to question number 22 now. They have said that a car is moving towards a building after 10 seconds. Okay, a car is moving. We will draw the diagram for this. Like this. Its angle of elevation with the building becomes 60 degree from 45 degree. Okay, like this. This is some theta. This is also some theta. Initially, it was 45, then it becomes 60, and time taken, they have said that 10 seconds. Let this one be time t. Let the speed be u meter per second. A, B, C, D. Okay, tan 60. Take it as h. Tan 60 can be written as h by ut. Okay. This will be ut distance, and this will be nu.
Fine. So tan 60 can be written as √3 equal to h by ut. Equation number 1. Again, tan 45 equal to h by 10 plus t, comma u. It means if you, this can be written as 1 and h by u can be replaced from equation number 1 as √3. So it becomes √3 by 10 plus t. Fine. So when you will do the cross multiplication, you are going to get 10 plus t equal to √3 into t is will be there. √3t. It means t value can be written as 10 upon √3 minus 1. So just you can rationalize this to find out the final answer. It will be √3 plus 1 by √3 plus 1. So 10 in bracket √3 plus 1 upon 2, 5. Your answer is 5 in bracket 3 plus 1. So time we got as 5 √3 plus 1. √3 value is 1.732. 1.73 plus 1, that is equal to 5 into 2.73. So that value when you will multiply it, you are going to get it as 23.65 seconds, which is option number C. Okay. So after this, question number 23, you can see they have given some equation, one of the following interval. Fine. See question number 23. B is greater than A, condition they have given, and equation is given as x minus A into x minus B. It is equal to 1. In which of the following interval? किस interval में lie करेंगे? Since they have given the equation x minus b equal to 1, 1 is a positive number, 1 is also greater than 0. So when you will equate it with 0, the two factors we are going to get as A and B. Here it is positive, negative, positive. So if you want the positive values, since they are saying that they need 1 will be lying in the positive region. So the solution set for this can be written as x belongs to minus infinity to A union B to infinity. So you can take option number C. Okay. Question number 24. What is the number of diagonals of a decagon? Number of diagonals of any polygon, number of diagonals of any polygon is given by nc2 minus n. So for decagon we have 10. For decagon n equal to 10, therefore 10c2 minus 10 will be equal to 10 into 2, 10 into 9 by 2, that means 45 minus 10, that is equal to 35. So you can take on option number B. Okay. Next, question number 25.
Sn equal to 5n plus 27n square. Value of common difference will be what? Common difference formula is directly 2 into 27. That is the coefficient of n square. That means 54. You can tick option number A as 54. Two options are similar. One C option you can neglect. That can be put some other values. Question number 26. A square plus B square equal to 14ab. They have given. Then they are asking you the value of log of A plus B by 4. Okay, fine. So what we can do here to make it a perfect square, provide it as 2ab to left hand side and to balance it to the right hand side 2ab also. It becomes A plus B whole square. It becomes 16ab. You can take this 16 to this side once again. It will become A plus B whole square by 16 equal to AB. That means A plus B by 4 whole square equal to AB. Just apply log to both sides. It will be log of A plus B by 4 whole square equal to log AB. So 2 will come outside. It will be 2 times of log of A plus B by 4 equal to log AB. Take this 2 to right hand side. You will get log of A plus B by 4 equal to 1 by 2 times of log AB. Okay, so which option you can take? Option number B. Okay, moving to question number 27. They are asking you the least value. 4 cos x square x plus 9 into sec square x. So we will apply the identities. For cosec square x, it can be written as 1 plus cot square x, 9, 1 plus tan square x, 4 plus 4 cot square x plus 9 plus 9 tan square x. Then we can write it as 4 plus 9 as 13 and write 2 cot x whole square plus 3 tan x whole square. A square plus B square, we can apply the formula. Will be 2 cot x plus 3 tan x. Or you can also take minus 1 here. Minus whole square, then plus 2ab. That means 2 into 2 into 4 into 3, 12 into cot x into tan x. Cot x and tan x will cancel out each other. We are going to get 13 plus 2 cot x minus 3 tan x whole square plus 12. So the least value 2 cot x minus 3 tan square x whole square will be equal to 0. That will become 13 plus 12, and that is equal to 25. So we can tick on option number A.
Okay. Question number 27 done. 28 we will do afterwards. We are moving to question number 29 first. Okay. Angle A equal to, they have said that it is 60 degree, and they are also saying A equal to 2 centimeter. Along with that, they are saying that A plus B plus C equal to 10 centimeter. Then they are asking you the in radius. That means find a small r. Formula for in radius is delta by s. Whereas we can find out easily. First, we have to see how we can find out delta area. So we will go for the cosine formula. Cos of A is equal to B square plus C square minus A square. Okay. Upon 2BC. Also, they have given A plus B plus C as 10 and A value. So we can find out B plus C equal to 10 minus 2. That is B plus C equal to 8. Cos A means cos 60 is equal to B square plus C square minus A is equal to 2 square, that is 4 upon 2BC. Okay. Cos 60 equal to 1 by 2 equal to, they have given B plus C whole square, B square plus C square. B square plus C square can be written as B plus C whole square minus 2BC minus 4 upon 2BC. You can cut this 2 and 2 from here. So we are going to get BC equal to B plus C means 8 square minus 2BC minus 4. 2BC will come to left hand side. It will become 3BC equal to 64 minus 4, that is 60. We can cut this 60 with 3, 20. So BC value is 20. Now, area of the triangle whose angle A is known. Area of triangle ABC will be given as half of BC into sin A. That means half of 20. Sin 60 is root 3 by 2. 2, 2, 4, this is 5. So 5 root 3 is the area, and therefore a small r in radius is given by delta by s. That means 5 root 3 by small s will be semi-perimeter. That means A plus B plus C, they have given 10 by 2. That is equal to 5 root 3 by 5. 5 will cancel out each other, root 3. So you can tick option number A. Okay. Moving to question number 30. Question number 30 is given as shadow of a tower standing on a level ground is found to be 120 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Okay. This is 120 meters longer, 30 degree than when it is 60 degree.
height of the tower they are asking, let it be x. 1060 h by x, that means root 3 equal to h by x. 1060, 1030 will be equal to h by x plus 120, 1 by root 3. Reciprocal the above equation, it will be equal to root 3 x plus 120 upon h. So you can use the value of x by h. When you separate it, it can be written as x by h plus 120 by h. So x by h can be written as 1 by 3. So our equation will become 1 by root 3 plus 120 by h. When you will do the cross multiplication, you are going to get 3 minus 1 upon root 3 equal to 120 upon h. That means 2 by root 3 is equal to 120 upon h. So h is equal to 60 root 3. You can match the option. Option number C is the correct answer. Question number 31. Okay. मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ फिर स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं. Okay. In 31 number question, they have said that sin inverse 1 minus x minus 2 into sin inverse x is equal to pi by. Fine. See, minus 2 sin inverse x will be written as write it like this: sin inverse of 1 minus x is equal to pi by 2 plus 2 into sin inverse x. Now 1 minus x can be written as sin of pi by 2 plus 2 sin inverse x. So sine of 90 plus theta, it is going to be in second quadrant, sine will be positive there, just convert it into cos 2 of sine inverse x. And this is equal to 1 minus x. Two cos of 2 sine inverse x equal to 1 minus x. So how we can solve it now? If we take the 2 sine inverse x as theta, so
x will become sine theta by 2. Okay. So cos theta can be written as two sine square theta by 2. So 1 minus 2 sine square theta by 2. Okay, that means 1 minus 2x. Or theta equal to 1 minus 2x square. So put it in this equation now. Put in equation number 1. It will become 1 minus x is equal to 1 minus 2x square. So it will be 2x square minus x equal to 0. We can take x common. In bracket we will get 2x minus 1 equal to 0. X equal to 0 and 1 by 2. Fine. So we have got two solutions for x here. Okay, one is 0, one is 1 by 2. We can check whether both the options are correct or not. If you put 0 here, it will become sine inverse 1, that is 90. And sine inverse 0 is 0, so 90. First option is correct. If you put 1 by 2 here, 1 minus 1 by 2 is 1 by 2. Sine inverse 1 by 2 is 30 degree. And 1 by 2, sine inverse 1 by 2 is 30 degree. 2 into 30 degree is 60 degree. 30 degree and minus 60 degree is not going to be equal to 90, right? So half will not be correct. If you put the value of half here, 2 sine inverse half, it becomes 30 degree. 2 into 30 is 60, but minus sign is there. So 30 minus 60 is not equal to 90. So there will be only one option correct. Okay. After checking, x equal to 0 is the only solution. Therefore, only one solution. As x is equal to half is not satisfying. So option A. Okay. You can see question number 32. Question number 32 is some determinant value sine square A, sine square B, sine square C, cot A, cot B, cot C, 1, 1, 1. A, B, C are angles of a triangle. So let A equal to 30, B equal to 60, and C equal to 90. 30, 60, 90. Just put these values in the above determinant value. Sine 30 degree, 1 by 2. Square, 1 by 4. Sine 60, root 3 by 2. Square, 3 by 4. Sine 91. Cot 30, root 3. Cot 60, 1 by root 3. This is cot 90, 0. Then 1, 1, 1. Now, solving this determinant value, I will go through row 3.
are 3. So we can write a minus a root 3 by 4. Then plus 1 into, sorry, root 3 minus 1 by root 3, then plus 1 into 1 by 4 root 3 minus 3 root 3 by 4. 3 minus 1 by root 3 plus 1 minus 9 by root 3. So you are going to get 2 by root 3 minus 2 by root 3. That is equal to 0. Wait. Okay. This is equal to 0. Option number, this is question number 32. So option number D is there with 0. Option B is the correct answer. Okay. Now moving to question number 33. What is the value of log 125 to the base 25 plus log 256 to the base 8 plus log 216 to the base 36? Okay. Okay, let's solve this one. So this can be written as log 25 as 5 cube. Just take 3 outside, and from 25 you can take 2 outside. You are left with log 5 to the base 5. Again 256
This is equal to 2 raised to power 8. Take 8 outside, then 3 outside from 8. So you will be getting log 2 to the base 2. Okay. Plus 216 is 6 cube 3 by 2 into log 6 to the base 6. So our next value will be 3 by 2 plus 8 by 3 plus 3 by 2. 3 by 2 plus 3 by 2 will become 3 plus 8 by 3. That means 9 plus 8, that is 17 by 3. So the option C is the correct answer. Okay. 17 by 3. Okay, question number 34. A is a square matrix of order 4 by 4 and determinant value of A equal to K. They have given order of matrix A is 4 by 4 and determinant value of A equal to K. Then you have to find the value of determinant value of adjoint A plus determinant value of adjoint A. Its formula is there. Determinant value of A power n minus 1, that means 4 minus 1 plus determinant value of A n minus 1 square. That means 4 minus 1 square. So your answer will become determinant value of A equal to K raised to 3 plus K raised to power 9. If you take K raised to 3 common in bracket, you will get 1 plus K raised to 3, which is option number okay. 3 into 2, it will be 6 here. If you take 3 common, you are going to get A2. A3 in bracket 1 plus 3. So your option will become B. 3 square is 9 fine it is. If you take 3 common, 6 will be left here, no? Okay. 1 plus K raised to 6. So option number B you can take, okay? Option B is the correct answer. See question number 35 now. Value of sine inverse under root 1 minus x square will be what? If x is less than 0. They have given x is less than 0 as the condition. Sine inverse under root 1 minus x square. This is 1. So this value will be equal to x. So that will be equal to, if you want to write this as according to the option, not x, you have to take minus x, because x they have given it should be less than 0. So it is equal to cos inverse of minus x, and that is equal to, according to the formula for inverse, phi minus cos inverse x. That means option number B. You can move to next question now. 36. The 36 is going to be lengthy, so we will skip for the moment.
we will see afterwards for this question number 36. We are moving to question number 37. Okay. F of x square is equal to 4x raised to 4 they have given. Then they are asking you to find the value of f dash of x. So it is quite clear, if f of x square is equal to 4x raised to 4, so we can write it like 2x square whole square, right? So therefore f of x will be equal to, you can write it like this, 4 you can take outside, just let x square be like this. So it will be 4 we are doing question number 37 here. Okay. So f of x can be written as 4x square. Okay. 4x square is your fx value. Now they are asking f dash 8, so just differentiate it. F dash of x will be equal to 8x. So they want f dash of 8, that means 8 into 8, and that is equal to 64. So if you go for the option, there is no 64 there, but the correct option is 64 only. There is a correction in the option. 64 is the correct answer. Moving to question number 38. Question number 38 is, if A and B are two sets, then A intersection A union B whole complement will be equal to what? Okay. A intersection A complement intersection B complement they have said. ठीक है? If you write it like this, A intersection A complement and again intersection A intersection B complement. So see, it is equal to phi intersection A. So phi intersection with anything will be phi. So your option will be equal to A. You can tick option number A. Moving to question number 39. In a class of 100 students, 65 students are passed in maths, 77 are passed in physics, then how many students are passed only in physics? If you go through Venn diagram for this, it becomes quite easy to solve this question. See, one is mathematics and another one is physics. This is maths, this is physics. 65, 77 have passed. How many students have passed only in physics? See, total students is number of students in maths 65 and 77 is for physics.
physics. So if you go through the formula, n of m union p will be equal to 65 plus 77 minus n of m intersection p. That means 100 equal to 142 minus n of m intersection p. N of m intersection p is equal to 142 minus 100. This value is 42. ये अगर 42 है तो मैथ्स टोटल 65 है, तो ये हो गया 23 और इधर हो गए कितने 77 है, मतलब कितने से 42 से जाना है। 277 में से माइनस किया तो 5 और 3 35 हो गया। इसको क्या चाहिए था, what it is asking, how many students have passed only in physics, so it is 35, option D. Only physics, 35, option D. Okay. Question number 40. What is there in question number 40? The number of reflexive relation of a set with 4 elements will be equal to what? The number of reflexive relation. There is a formula which you should know. Number of reflexive relation is given by 2 raised to power n square minus n. Therefore, 2 raised to power n value they have given as 4. Given n equal to 4. Therefore, 2 raised to power 4 minus 2. 2 raised to power 2. N value is 4. 4 square is 16 minus 4. That is 12. So option B. See question number 41. 10 coins are tossed simultaneously. The probability of getting at least 8 heads will be what? Question number 41. 10 coins are tossed simultaneously. At least 8 heads. Eight head, 9 head, 10 head. Okay. That will be equal to, out of 10 C2, you need 8 heads, 10 C8 plus 9 C8. Total we have 10, no? So 10 C8, then 10 C9 you want, and then you will need 10 C10. 10 C8 will be equal to 10 into 9 by 2. That means 45 plus 10 C9 is 10 and 10 C10 is 1. So you are going to get 56. So probability will be equal to 56 by total 2 raised to 10, that is 1024. So we can cut it with 4.
14, 8 also. 7 by 128. So 7 by 128, that is option number A. Okay, fine. See question number next. This is question number 42. Question number 42, what they are asking? Function f of x is equal to sine of mod of x. And what they have given here? Okay, they have given 4 options to tick. See, mod x graph, if you see, it is a sharp turn at point 0. Okay. So along on that mod x, if you apply sine, you are going to get your graph like this. Okay. And from here, it will be like this. Since a sharp turn is there at 0, since a sharp turn is seen at x is equal to 0, therefore f of x is not differentiable at x is equal to 0. Differentiable at x is equal to 0. Option number B you can take, okay? Option number B. See question number 43. They have given a quadratic equation x square plus 2x plus 4 equal to 0. And they have said that x1 and x2 are the roots. If x1 and x2 are the roots, so we can apply the sum of the roots and product of the roots relation. That means x1 plus x2 equal to minus 2 and x1 into x2 equal to 4. So for question number 43, information. Now we will try question number 43. They are asking you to find out the value of x1 square plus x2 square plus 5 times of x1 into x2. That means x1 plus x2 whole square minus 2 into x1 x2 plus 5 into x1 x2. That is equal to x1 plus x2 whole square plus 3x1 x2. So minus 2 whole square plus 3 into 4. That is 4 plus 12. And that is equal to 16. So option A. Next, question number 44. Equation with roots are 2x1 and 2x2. Equation with roots are 2x1 and 2x2. Taking 2x1 and 2x2 as the new root.
It is very simple. Summation will become 2 times. Sum will be 2 times of x1 plus x2, and product will be equal to 4 times of x1 into x2. Therefore, equation will become x square. What is the original equation? X square plus 4x and plus 4 into 4, 16. So your option will become B. Option B is the correct answer. What is in question number 45? Value of x1 square plus x2 square is 2x1 raised to 4 plus x2 raised to 4 will be what? Okay. Just see question number 45, all of you. You have to find the ratio of x1 square plus x2 square is to x1 raised to 4 plus x2 raised to 4. So you have the values of x1 plus x2. So you need to find out the values first. See, x1 plus x2 is equal to minus 2 from the equation. You can find out x1 plus x2 is equal to minus 2. Correct. Squaring both sides, we will be getting x1 square plus x2 square plus 2x1 x2 equal to 4. Therefore, x1 square plus x2 square will be equal to 4 minus 2. x1 into x2 we get from the equation as 4. Okay. x2 is 4. 2 into 4, 8. 4 minus 8, you are going to get minus 4. Again squaring. Again squaring both sides. x1 raised to 4, x2 raised to 4 plus 2 into x1 square into x2 square, 16. x1 raised to 4 plus x2 raised to 4 plus 2 into x1 x2 means 4 chi square, that is equal to 16. So we are going to get x1 raised to 4 plus x2 raised to 4 equal to 16 minus, but this x1 raised to 4 plus x2 raised to 4 equal to minus 16. Now ratio. Now value of x1 square plus x2 square dividing it by x1 4 plus x2 4 equal to minus 4 by minus 16. 1 by 4. So option B. You can tick on option number B. See question number 46, students. We have
to find the value of 1 plus iota raised to 5 multiply with 1 plus iota raised to 7 multiply with 1 plus iota raised to 8. Okay. So since 1 plus I, 1 plus I, 1 plus I is common to all, we can take it like this: 1 plus I whole raised to power 5 plus 7 plus 8. That is equal to 1 plus I is 20. So you can write it like this: 1 plus I square whole raised to 10. So when you will solve it, 1 minus 1 minus 2I whole square. You will be getting 2I whole square whole raised to 10. That is minus 4 raised to 10. Okay, no need of writing square because it is already square, no? So you will be getting minus 2 raised to power 10, that is equal to minus 1024. Option number D. Try question number 47 now. Plus 2 plus iota 2n plus 3 plus iota 2n plus 4 plus iota 2n plus 5 plus iota 2n plus 6. Okay, this is the question. So we know when consecutive 4 terms for iota will come, then that value will become equal to 0. If you see these 4 terms, this is going to be equal to 0 because they are consecutive terms. Now what is left is only iota raised to power 2n plus 5 plus iota raised to power 2n plus 6. That's all. So you have to solve these two values. If we take in terms of n, if you try to solve, we can put the value of n. Put n is equal to 1. So what it will become? I to the power 7 plus I to the power 8. That is equal to minus iota plus 1. That means 1 minus iota. If we check the option by putting the value of n in each of the option, so your option B will be matching. Okay. We have taken 1, no. If you put 1 minus 1 to the power 1, it will be negative. No. Option A will be matching. Option A is minus 1 to the power 1 plus 1. Okay. In bracket 1 minus I. So it is equal to minus 1 to the power 2 1 minus I. That is 1 into 1 minus I. So your option will be 1 minus I. Okay. So option number A is matching. Put option A as the correct answer. Moving to next question number 48. Sin x plus log of 1 minus x upon x square. They are asking you to find out the value for this. So if you put the value of 0 here, we are going to get 0 by 0. So for 0 by 0, apply L'Hospital rule. If you differentiate it, you are going to get cos x
1 by 1 minus x into minus 1 upon 2x, limit x tends to 0. Again it is 0 by 0, so you have to differentiate once again. It will be then minus sin x minus 1 by x. It is equal to plus 1 by 1 minus x whole square into again minus 1 all divided by 2. Now if you put the value of x at 0, sin 0 will become 0. So your answer is going to be 0, then minus 1 by 2. So your final answer is minus 1 by 2, and option number C is the correct answer. Then this was for 48 number question. Then we will be going for 49 number question. Okay. See question number 49, students, what they are asking. In how many ways number greater than 24,000 can be formed? Numbers greater than 24,000 using the digits 1, 2, 3, 4, 5. No digits repeated. Okay. First, greater than 24,000. Just fix these positions 2 and 4. 1, 1. Here you can 3 factorial. Still you have numbers. That means 2 for 3, 5 and 1. So you have 3 factorial ways here. That is 6. Yes, 1. Number 2. टू को अभी भी हमने फिक्स किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 4 न रख के अपन रख सकते हैं 5. अगर मैंने यहाँ पे 5 को फिक्स किया है सिर्फ, तो इसको भी हमने 5 से फिक्स किया है, तो यहाँ पर भी मेरे को 3 फैक्टोरियल मिलेगा, ये भी 6. और तीसरा केस जो है मैं लूंगा 2 से ग्रेटर वाले नंबर कौन से, 3, 4, 5. ये वाले पोजीशन पे मेरे पास 3 वेज. और यहाँ पे बाकी जगह पे मैं 4 फैक्टोरियल. तो ये कितना हो जाएगा, 3 into 4 factorial, 3 into 22. Therefore, total is equal to 6 plus 6 plus 8. So, option number A. You can take on option number A.
f of x is equal to minus 4x square plus 4x plus 5. They are asking you the maximum value. So first we will differentiate it. Minus 8x plus 4. Then we will equate it with 0. Here we will get x is equal to 1 by 2. Put this value x is equal to 1 by 2 in f of x to get the maximum value as f of 1 by 2 minus 4 into 1 by 2 का square plus 4 into 1 by 2 plus 5, that is equal to minus 4 into 1 by 4 plus 4 by 2 plus 5, that is equal to minus 1 plus 2 plus 5, that is equal to 6. You can tick on option number A. (51) number question you can see. Fifth harmonic mean. Between 3 and 6 by 13. Harmonic mean between 3 and 6. So we know that reciprocal of harmonic progression is arithmetic progression. So 1 by 3 and 13 by 6 3, फिर उसके बाद A1 A2 A3 A4 A5 and 13 by 6 will be in AP. Here. Okay. Now, common difference formula is b minus a upon n plus 1, that is equal to 13 by 6 minus 1 by 3 upon 5 plus 1. So that will be equal to 13 minus 11 upon 6 by 6, that is 11 by 66. So now A5 is equal to 1 by 3 plus 5 into D, that is 11 by 66. That is equal to, sorry, minus 2, 11. This can be simplified like 1 by 5. So 1 by 5. 5 and 5 will cancel out each other. So it is equal to 4 by 3. No, there is, wait. 1 by 3, 13 by 6 will be in AP. So D is calculated as 13 by 6 minus 1 by 3. 2. 13 minus 2.
13 minus 2 is 11 by 6 by n plus 1. That means 13 by 6, 13 by 6 minus 1 by 3. Thirty-three by 6. 59 minus 6 is 33 by 6 and 18. N plus 1. Okay, so for 13 by 6 if we write, let me check once. If we write 13 by 6 equal to 1 by 3a plus n minus 1 into d, that means 6 into d. Minus 3 and 13 they are given in the question. Okay. Harmonic mean between this and this. So I've taken the reciprocal of this. Okay, 11 by 6 into 6, it is 36. Okay, we got common difference d as 11 by 36. Now we have to find a5. a5 is equal to a plus, that is 1 by 3 plus 5 into d. Common difference will be 11 by 36. So when you will solve it, you are going to get 1 by 3 plus 55 by 36. 12, it is 67 by 36. This is A5. Therefore, this is for arithmetic mean. For harmonic mean, fifth term for harmonic mean. H5 will be equal to reciprocal of A5. That is equal to 36 by 67. So option B is correct. Coming to 52 number question. Value of, see what they have asked. Log 4 to the base 3. Log 4 to the base 3 into log 5 to the base 4 into log 6 to the base 5 into log 7 to the base 6 into log 8 to the base 7 into log 9 to the base 8. That can be written as log 4 by log d multiply with log 5 by log 4 into log 6 by log 5 into
log 7 by log 6 into 8 by 3 log 8 by log 7 into log 9 by log 8। तो जो जो कट हो रहा है उसको कट करो। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। व्हाट इज लेफ्ट? log 9 by log 3। That is equal to 2 log 3 by 3. Answer will be 2. So what is the option? 2. Option A you can. Question number 53. There is some quadratic equation given, and also they have given some B and C points in set form. Then they are asking to find out the value of A cross B intersection C. So if you see, B equal to, they have given 2, 4, and C also they have given 4, 5, and A is some quadratic equation, x square minus 5x plus 6 equal to 0. That means A value is equal to 2 and 3. Okay. A cross B intersection C. A का मतलब हो गया 2, 3, एंड B क्रॉस C में है आपके पास, B इंटरसेक्शन C में है आपके पास 4। तो ये वैल्यू आपको हो जाएगा 2, 4 and then 3, 4. So option number C. Question number 54. Binomial probability distribution mean is 3. In binomial distribution, mean formula is NP. Mean is given by NP equal to 3 and standard deviation there 3 by 2. This implies that variance, that is equal to NPQ equal to 9 by 4. Therefore, now NPQ dividing it by NP is equal to 9 by 4 divided by 3. So you will be getting 3 by 4 Q value. Q is equal to 3 by 4. That means P is equal to 1 by 4, and which implies N will be equal to 3 into 4, that is equal to 12. 12, option A. Continue. Number 55. Number of solution of the equation. Equation they have given 16 raised to power sin square x plus 16 raised to power cos square x equal to 10.
16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10 दे रखा है, ठीक है। और 0 से पाई के बीच में एक्स लाई कर रहा है, तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। और ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो 2, 4, 3, 6 ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। चलो इसको ट्राई करते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10। That means 16 sin square x plus 16 upon 16 sin square x equal to 10. Put 16 sin square x as t. इक्वेशन क्या बन जाएगा? t plus 16 upon t equal to 10. Do the cross multiplication. T square minus 10t plus 16 equal to 0 के रूट्स। t square it can be written as minus 80 minus 2t plus 16 equal to 0. If you take t common, t minus 8 minus 2 common, t minus 8 equal to 0. t minus 8, t minus 2 equal to 0. तो यहाँ पे हमें t का एक 8 वैल्यू मिल गया, t का यहाँ पे 2 वैल्यू मिल गया। t हमने क्या लिया था? 16 to the power sin square x. That means यहाँ पे 8 है। अगर मैं 2 के पावर में रखता हूँ इसको, ऐसा लिख लो, साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज log 8 to the base 16
2. This can be written as sin square x is equal to log 2 to the base 16. तो यहाँ से आपको sin स्क्वायर x का वैल्यू मिल रहा है 3/4 और यहाँ से आपको sin स्क्वायर x का वैल्यू मिल रहा है 1/4. तो इसको हम लिख सकते हैं x रूट 3/2 और यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/2. ठीक है. साइन x का वैल्यू अगर रूट 3/2 ले रहे हैं हम, तो x का वैल्यू यहाँ पे दो हो सकते हैं, 60 एंड 120. और यहाँ पे अगर आप देखोगे साइन x का वैल्यू अगर हम 1/2 लेते हैं तो x का वैल्यू एक हो जाएगा 30 और 150. तो टोटल 4 सॉल्यूशंस. Therefore total 4 solutions. Option D. Coming to question number 56. Value of limit x tends to pi by 3. Cos square x plus cos x minus 2 upon cos square x plus 4 cos x minus 5. First we will check by putting the value pi by 3. Cos pi by 3, it means cos 60 is 1/2 square 1/4 plus 1/2 minus 2 dividing it by 1/4 plus 4 into 1/2 minus 5. So 3/4 minus 2. 3/4 minus 2 dividing it by 1/4 minus 3. Okay, so what you will get after solving it? 3 minus 8 upon 1 minus 12, that is equal to minus 5 upon minus 11. So your answer is 5/11. That means option A. You can see question number 57. F of x is equal to mod of x plus a. Then which one of the following is not correct? If you see the graph for mod of x plus a, it will be minus a somewhere here. When you draw the graph for mod of x plus a, it is like this. F of x is not differentiable at x is equal to minus a. Yes, it is quite simple because sharp turn is there. F of x is not differentiable at x is equal to minus a. So option C is correct. In question number 58, they have given f of x is equal to x cube minus
6x square minus 36x plus 7. This is an increasing function in the interval what? Okay. So just differentiate it first. We will get 3x square minus 12x minus 36. And when you will equate it with 0, we are going to get 3 common x square minus 4x minus 9. So x square minus 4x minus 12 equal to 0. Common x minus 6 plus 2 common x minus 6 equal to 0. So you can see here, we are going to get x minus 6 in bracket x plus 2 equal to 0. When you will equate it with 0, we will get two values. That means minus 2 and 6. So by wavy curve method, if you put the signs, you have to put a positive, negative, positive. But they have asked for increasing functions, so you have to take the positive part. Therefore, increasing for minus infinity to minus 2 union 6 to infinity. Option A. Question number 59. We are asking you minimum value for some f of x value given as 4e raised to power 2x plus 9e raised to power minus 2x. Okay, that's all. So first we will differentiate it. We are going to get 8e to the power 2x minus 18e to the power minus 2x. When you will do the f dash x equal to 0, we are going to get 8e to the 8e to the power 2x. G. Okay. Just part will be done by Aman sir. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 59 में हम क्या करेंगे, एमजीएम लगाएंगे, क्योंकि जब भी आपको लिस्ट वैल्यू की बात किया जाएगा तो एमजीएम लगाओ और आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी बनेंगे। ये आइडिया कैसे आएगा? अगर एक फंक्शंस दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, तो वहां से आइडिया आता है। एम क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है। ये हमारा दो फंक्शंस है, और जीएम में प्रोडक्ट में जाएगा तो एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारे फंक्शंस का वैल्यू कितना आ गया, 12 से हायर आना चाहिए ना, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर 59। 60 एक्स ओ जेड प्लेन डिवाइड कर रहा है दो पॉइंट को। 3D का क्वेश्चन है। पहला पॉइंट क्या है? 2, 3, 1।
दूसरा पॉइंट क्या है 6,7,1। तो ये एक्स और जेड प्लेन का मतलब क्या होता है, आप इसको समझो वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये एक्स ओ जेड प्लेन डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में पूछा है। तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, जो वाई का कोऑर्डिनेट का जो रेशियोज होंगे 3:7। आपका आंसर क्या आना चाहिए 3:7। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। अगर कभी भी कोई भी कोनिक का क्वेश्चन लाइक सर्कल है, सर्कल दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है तो क्या होता है, सेंटर और रेडियस इक्वल होता है। इस सर्कल की बात कर रहा था मैं 2D में। बस मैं एनालॉजी यूज करने वाला हूँ यहाँ पे क्या बोला है कि स्फीयर टच कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो दैट मींस जो आपके सेंटर होंगे लाइक यू भी 3D में हम क्या डिनोट करते हैं, यू भी डब्ल्यू डिनोट करते हैं ना, वो आपकी रेडियस के बराबर होना चाहिए, और रेडियस यहाँ पे पी दे रखा है। तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस सेंटर का स्क्वायर प्लस वाई माइनस सेंटर का स्क्वायर, वाई सेंटर जो भी होगा, जेड माइनस सेंटर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है कि जो स्फीयर है किस ऑक्टेंट में है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट कंसिडर करेंगे, अगर मेंशन नहीं है तो फर्स्ट कंसिडर कर सकते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2p कॉमन आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये 3p स्क्वायर और ये पी स्क्वायर एक कैंसिल आउट होके ये बचेगा 2p स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 61 का -2p, ऑप्शन सी। आप मैच करके देख लो क्या आ जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखना है अगर टच करेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस को तो सेंटर और रेडियस सेम होगा, सेंटर और रेडियस सेम होगा। 62 नंबर, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पूछा गया, बेसिक सा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा लाइन के क्वेश्चंस को। यहाँ पे क्या है 2x-1 3y-2 4z-3 है। अब 2 से डिवाइड कर दो, तो अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका, या तो आप 2 कॉमन भी निकाल सकते हो, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो डिफॉल्ट 1 लिख लो आप समझने के लिए। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो y-2/3 अपॉन 1/3 आ जाएगा, और यहाँ पे z-3/4 अपॉन 1/4। अब ये ABC मिला, मतलब जो हमारा ABC है डायरेक्शन रेशियो है वो आपका क्या है 1/2 1/3 1/4। ये फ्रैक्शंस में है तो आप फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर लो इंटीजर्स में, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो। तो एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा, 12 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बनेगा 6 4 3। ये आपका क्या बन गया डीआर बन गया। हमें क्या पूछा गया है डीसी पूछा गया है, तो डीसी के लिए क्या करना पड़ेगा कोफिशिएंट के स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। कोफिशिएंट वैसे भी आप अगर आप देखो तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 643 वाले, तो यहाँ पे जब आप एलएमएन निकालेंगे, एलएमएन कैसे निकालते हैं, मतलब हमें क्या करना पड़ता है, जो अंदर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा उनसे डिवाइड करना पड़ेगा डीआर को। तो एबीसी तो ऊपर में होगा ही होगा ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 16 प्लस 9, तो ये 61 आ जाएगा। क्लियर है, तो इसलिए आंसर सी आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। क्लियर है, 3/3 बोल रहा हूँ, यहाँ पे ए का वैल्यू 6 है ना, 6/√61। यहाँ पे प्लस माइनस में भी हो सकता है, बट यहाँ पे हमारे पास प्लस दिया हुआ तो प्लस में ही रखेंगे। ठीक है, 3/√61, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 63 की बात कर लेते हैं हम, इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे फंक्शंस क्या दे रखा है, e की पावर x, e की पावर -x का स्क्वायर दिया गया है। क्लियर है, अब e की पावर -x को आप क्या लिख सकते हैं 1/e⁻x लिख सकते हैं रेसिप्रोकल में, फिर उसको सब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये e की पावर 2x ऊपर बनेगा और नीचे भी बनेगा e की पावर 2x + 1 e⁻2x, पर इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है। ये हमारा इंटीग्रल हो गया सिंप्लीफाई होने के बाद। अगर नीचे वाला टर्म्स को टी पकड़ते विदाउट स्क्वायर, इस चीज का ध्यान रखना है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ e की पावर 2x e की पावर 2x + 1 को अगर मैं टी पकड़ूंगा तो e की पावर 2x dx हमारा क्या बन जाएगा dt/2 बन जाएगा। ठीक है, तो 1/2 तुम्हारा बाहर हो गया, ये बन जाएगा dt/t²।
तो इसका तो इंटीग्रल -1/t हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, -1/t के जगह पे फिर से सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ फंक्शन 2x + 1। सही है क्या? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64। प्रोजेक्शंस पूछा गया, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। अगर ए का प्रोजेक्शंस बी पे निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रोजेक्शंस ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर अगर कैलकुलेट करना है तो ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई के कोएफिशिएंट आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे के कोएफिशिएंट जे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ बी ले लेंगे जो कि √3 है, तो ये 3 + 2 + 1 6, 6/√3 हो जाएगा। तो ये आपका 2√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। 64 65 की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो बस वाई कोऑर्डिनेट का रेशियो लेना है आपको। बता रहे लाइन जॉइनिंग द पॉइंट डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, तो वाई कोऑर्डिनेट का रेशियो आप निकाल लो, मतलब 6 अपॉन माइनस में लेना पड़ेगा -3, ये आपका रिक्वायर्ड रेशियो आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2/, ओके उल्टा लिख लिया मैंने, मतलब यहाँ पे -3/6 -3/6, तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट 66, एरिया बाउंडेड बाय द साइन एक्स एंड 0 to 2π पूछा गया है। तो ये आप क्या करो, 0 to 3π में मत सॉल्व करो, 0 से पाई के लिए सॉल्व कर लो, फिर सिमेट्री यूज कर लेंगे। तो 0 से पाई का जो एरिया होगा वही पाई से 2π का एरिया होगा, वही 2π से 3π का एरिया होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पाई के बाद साइन का ग्राफ नीचे चला जाता है तो एरिया तो नेगेटिव नहीं होता है ना, तो मॉड डाल के तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ, वैसे तो सारे बच्चों को पता होना चाहिए, 0 से पाई के लिए जो एरिया होता है साइन का 2 होता है। तो साइन एक्स एरिया निकाल लो यहाँ पे 0 से पाई के लिए, तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। 0 से पाई के लिए हम एरिया निकाल रहे हैं, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, -cos x होगा। माइनस बाहर कर देता हूँ cos x, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो -1 -1 -2 बनेगा, फिर -1 बाहर में तो 2 बन जाएगा। तो 0 से पाई के लिए हमने एरिया क्या निकाला, पाई निकाला ना, सॉरी 0 से पाई के लिए एरिया 2 निकाला ना, 2 यूनिट निकाला। तो आपको क्या निकालना है, 3 पाई तक के लिए निकालना है। तो 0 से पाई का एरिया, 0 से पाई इस डोमेन का एरिया 2 है। तो अगर आप एरिया 0 से 3 पाई के लिए निकालेंगे, 3 अलग अलग सेगमेंट बनेगा और सबका एरिया तो 2 ही आएगा, तो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 6 यूनिट स्क्वायर। नेक्स्ट 67, इफ द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल आर दिस एंड दिस, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा गया, क्या होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दो अपोजिट वर्टिसेस दे रखा है रेक्टेंगल का, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल है, एल और बी दे रखा है। तो टू अपोजिट वर्टिसेस, वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल, मैं इसे बोल रहा हूँ कि ए और ये बी है। ए क्या दे रखा है आपका, -3 -2, बी हमारा क्या दे रखा है 5 7। ठीक है, तो ये तो हमारा डायगोनल हो गया ना, तो अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो डायगोनल मिलेगा, लेकिन थोड़ा इन्फॉर्मेशन इनसफिशिएंट लग रहा है। चलो देखते हैं, 7 -2 बनेगा, 9 का स्क्वायर 81 बन जाएगा, 5 + 3 8 बनेगा, 8 का स्क्वायर 64 बनेगा। तो इन दोनों का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 5 145 आ जाएगा। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा, 145 आ जाएगा। तो एक और इन्फॉर्मेशन होना चाहिए यहाँ पे, जिनकी वजह से मैं कुछ एल और बी का कुछ इक्वेशंस और निकाल के सॉल्व कर पाऊंगा, अदरवाइज मुश्किल है इसको सॉल्व करना। 68, the equations of circle in the first quadrant touching the coordinate of the axis at a distance 2 unit from the origin। अभी सेम टाइप का क्वेश्चन स्फीयर के लिए डिस्कस किया था। तो एक सर्कल है जो टच कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
और वो जो टच कर रहा है उसका डिस्टेंस दे रखा है 2 यूनिट, ये भी 2 है, ये भी 2। तो यही तो आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया 2,2 h, के। तो जो h है वही k है और वही हमारा रेडियस होता है इस केस में, और सबका सब हमारा क्या है 2 है। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर तो तुम्हारा 2 ही है ना, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, 4 प्लस 4 8, इधर भी आपका 4 है। तो अगर इस 4 को आप इधर लेके आ जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 4y, और ये प्लस 4 इक्वल टू 0। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 68। चलो 69 पे आ जाते हैं। Two consecutive sides of parallelograms given and the equations of one diagonal is also given। तो पूछा गया कि दूसरे वाले डायगोनल का इक्वेशंस क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 69 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो टू कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स गिवन है, तो देखो दोनों में कांस्टेंट नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर दो पैरेललोग्राम्स की दो साइड गिवन है, एक 4x प्लस 5y ले लो कंसेक्यूटिव आजू बाजू वाले, और दूसरा 7x प्लस 2y है, तो इनका तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन आ जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ा मुझे। ठीक है, अब द इक्वेशंस ऑफ अदर डायगोनल बोला है, तो जो हमारा डायगोनल होगा अब ओरिजिन से पास करेगा। बोलोगे यही अदर डायगोनल, आपको कैसे पता चला। देखो अदर डायगोनल ये इसलिए है क्योंकि जो दूसरा डायगोनल है 0,0 उस पर पुट करेंगे तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, तो जो बचा हुआ इक्वेशन जो दे रखा है यहाँ पे, ये इस लाइन का इक्वेशन, ये ब्लू कलर से जो मेंशन किया हूँ ये डायगोनल है, थोड़ा डायग्राम। हाँ, ये इसका इक्वेशन दे रखा है, तो यहाँ से तुम इसका स्लोप निकाल सकते हो ना। ये जो 11x प्लस 7y इक्वल टू 9 है, उसका स्लोप क्या आ जाएगा, -11/7 आ जाएगा। तो ये पैरेललोग्राम्स है। ओके, equations of one of the diagonal is this and the equations of other diagonal क्या होगा। ठीक है ना, तो हम ये पॉइंट निकालेंगे, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ट्राई करेंगे निकालने के लिए। ये पॉइंट कैसे ट्राई करेंगे, ये जो दो लाइंस था, चलो इसको नेमिंग कर लेते हैं, ये ओ है, ये ए है, ये बी है। हम कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकालेंगे, स्लोप का जरूरत नहीं है, स्लोप का जरूरत नहीं है। रोम्बस होता तो क्वेश्चन रोम्बस में पूछा जाता तो ऐसा होता है, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो दूसरे जो अदर डायगोनल है उसका आपको स्लोप मिल जाएगा, फिर आप इक्वेशंस निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे पैरेललोग्राम्स है तो 90 डिग्री नहीं होते डायगोनल, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक निकालना पड़ेगा और बी निकालना पड़ेगा। ए बी का मिड पॉइंट ये पॉइंट पी होगा, और फिर 2 पॉइंट मिल जाएगा तो 2 पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। तो ए और बी कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x इक्वल टू 5y। तो चलो यहाँ पे हम रख लेते हैं 4x इक्वल टू 5y प्लस 5y इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व करने के लिए कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा, तो आप इसमें क्या करो, 4 मल्टीप्लाई कर दो और इसमें आप 11 मल्टीप्लाई कर दो, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स वाले टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, 7 4 जा 28y आ जाएगा, एंड 11 माइनस 55y आ जाएगा, और इधर 36 आ जाएगा। क्लियर है, हाँ, ठीक है। तो ये y का वैल्यू इधर -27 आ जाएगा इक्वल टू 36, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -36/27, इस तरह से निकल के आएगा y का वैल्यू। तो y मिल गया, y मिल गया, तो आप x भी निकाल सकते हो। कैलकुलेशन 44 तो y हमारा कितना है, -36/27। x कितना निकल के आएगा, x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 4x इक्वल टू -5y करेंगे, फिर x इक्वल टू -5y/4। अब y का वैल्यू तुम्हें पता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 36, 4 इंटू 27, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 4 जा 27 और 9 3 जा 27, तो ये आपका क्या बन जाएगा 5/3। बेसिकली क्या बनेगा 5/3 बनेगा। ये तो हमारा एक क्वाड्रेंट मिल गया। इसी तरह ये इधर वाले भी क्वाड्रेंट निकालना पड़ेगा, बी वाले क्वाड्रेंट भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 11x प्लस 7y इक्वल टू 9, 7x प्लस 2y इक्वल टू 0।
कोफिशिएंट को सेम करने का ट्राई कर लिया जाए। इसमें आप 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें आप 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 2 22 माइनस 49 x इक्वल्स टू 18। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? माइनस 18 अपॉन माइनस 18 अपॉन 27। सही है। तो ये 9 का फैक्टर है तो ये -2/3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? हाँ, -2/3। अच्छा, ये भी कैंसिल हो रहा था, इस मुझे भी यहाँ पे भी ध्यान देना चाहिए था। ये तो कैंसिल हो जाता, 9 का फैक्टर था -4/3, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या आ गया था? -4/3 आ गया था। कैलकुलेशन इतना डिफिकल्ट होता ही नहीं। ये तो -4/3 था। अच्छा, यहाँ पे हमने पहले x निकाल लिए, वो कितना निकल के आ गया? -2/3। अब y निकाल लेंगे। y हमारा कैसे निकल के आएगा? y निकालने के लिए जब जाएंगे 7x + 2y = 0 है ना, तो 7x + 2y = 0 है। तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -14/3 इक्वल्स टू -2y। तो y इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 7/3। y क्या आ जाएगा आपका? 7/3 आ जाएगा। अब इन दोनों का मिड पॉइंट से आप p निकाल सकते हैं। p कैसे निकल के आएगा? दोनों का सम करेंगे। -2/3 5/3 3/3, ये क्या बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। तो p का जो x कोऑर्डिनेट होगा, इन दोनों का x कोऑर्डिनेट का सम बाय 2 करेंगे ना, ये 1/2 आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट ले जाएंगे 7 - 4 3, ये भी हाफ बन जाएगा। तो ये हाफ और हाफ से पास कर रहे हैं। ठीक है। तो स्लोप क्या आ गया? 1 आ गया। तो ये तो y = x आ गया ना, ये लाइन क्या आ गया? y = x। यही हमारा डायगोनल है। तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। ऑप्शंस बी x - y = 0 आ जाएंगे। क्लियर है? ये अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाते हैं। सॉल्यूशंस निकालने के लिए पूछा गया। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्लियरली दिख रहा है, तो dy बाय y डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। dy बाय y वाले टर्म्स y के साथ, x वाले टर्म्स x के साथ इंटीग्रेट कर लेंगे। क्या हो गया? तो dy बाय y का इंटीग्रेशन log y आएगा। यहाँ पे x² का डेरिवेटिव ऊपर में है, इसको हम लिख लेंगे log ऑफ x²। और जब सारे टर्म्स log में आएगा तो log ऑफ कांस्टेंट आप मेंशन कर लो। ऐसा हो गया। अब आप ये माइनस वाला टर्म्स इधर आ जाएगा, प्लस में जाएगा, और log का प्लस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y(x² = c आ जाएगा। y(x² = c आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71। The equations of tangent with the slope is half to the parabola is इक्वेशंस पूछा गया है। तो स्लोप कैसे निकलता है? बेसिकली डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। किसी भी कर्व को डिफरेंशिएट कर दो तो उस पॉइंट का स्लोप निकल के आ जाएगा। और पॉइंट पुट करते हो तो चलो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 4x 7 dy/dx। अब dy/dx ही हमारा स्लोप है। हम जो dy/dx कहलाया था वो हमारा क्या है? हाफ से। तो अगर इक्वेशन चाहिए तो पॉइंट भी तो चाहिए। इसके लिए इन्फॉर्मेशन काफी है ना। अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे? हाफ पुट कर देंगे। इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट विद द स्लोप दे रखा है, तो ये 7/2 बन गया। तो x का वैल्यू कितना बन गया? 7/8। अब अगर आपका x 7/8 है तो y भी निकाल लेंगे। इक्वेशंस में फिर से जो इनिशियल इक्वेशंस है वहां पे आप x का वैल्यू पुट कर दीजिए तो y मिल जाएगा। तो y के लिए 2 × x² करेंगे, मींस 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 7y। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 64 है। तो y का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? 7/32। क्लियर है? तो मुझे x और y मिल गया। स्लोप तो हाफ हाई, ये मतलब ये पासिंग पॉइंट हो गया। इक्वेशंस कैसे लिखते हैं? y - y1 m टाइम्स ऑफ x - x1। ये आपका इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट। ये हमने क्या निकाला? इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट। क्लियर है? चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। कैंसिलेशंस कर लिया जाए। ठीक है ना? ये 32y 32 का एलसीएम ले लूंगा लेफ्ट साइड में, -7/32। इधर बनेगा 8x - 7/16। ये कैंसिल आउट होगा, 2 बन जाएगा। 32y - 7 16x - 14। ओके, सारे टर्म्स एक साथ आ जाएगा। 16x - 32y और ये
आपके बन जाएंगे -7 = 0। तो यहाँ तो 2 का मल्टीपल मिसिंग है, इवन 4 का मल्टीपल मिसिंग। x equals to 7 times 1/2, x is 7/8। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शंस में प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। अप्रोच, इसका ध्यान रखना है, जो स्लोप की बात किया गया तो आपका dy बाई dx होता है स्लोप, और जो कर्व दिया गया आप उसको डिफरेंशिएट कर लो, फिर dy बाई dx का वैल्यू पुट किया तो मुझे x मिल गया, x का वैल्यू इक्वेशंस में पुट किया तो y मिल गया, फिर इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट जो लाइन होता है, टेंजेंट भी तो लाइन ही होता है ना, y माइनस y1 m टाइम्स ऑफ x माइनस x1 मैंने अप्लाई कर दिया, सिंप्लीफिकेशन करना था, बाद का बात है। 72, तो हर एक वैल्यूज इक्विवेलेंसी में लिखा हुआ है, लेकिन 4 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ b, 10 times of probability of A intersection B is 3 दे रखा है। तो ऑब्वियसली बात है P of A क्या आ जाएगा, 3/4 हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर कर लो। P of B क्या आ जाएगा, 3/6 आ जाएगा, मतलब 1/2 आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं जो सिंप्लीफाई हो सकता है। एंड P A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा आपका, 3/10 आ जाएगा। तो हमें कंडीशनल पूछा गया B बाय A का वैल्यू क्या होगा, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, B बाय A मतलब जस्ट फॉर्मूला ही तो लिखना है आपको, मतलब B इंटरसेक्शन A, इंटरसेक्शन कम्यूट होता है, इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ये सेम ही आएगा, डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए, तो 3/10 3/4, तो ये 4/10 आ जाएगा, मीन्स 2/5 आ जाएगा, ऑप्शन बी। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। इस क्वेश्चन को 73 में चेक करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है या नहीं। मीन के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो वेटेड मीन में फ्रीक्वेंसी की जगह पे वेट आ जाएगा। ठीक है, xi wi अपन समझना WI। अब ये क्या बोल रहा है, n नेचुरल नंबर्स जो है उसका जो वेट है स्क्वायर के उसी के स्क्वायर है, मतलब जो मान लो फ्रीक्वेंसी, जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता है ना, यहाँ पे वेट आ गया, जैसे अगर ऑब्जर्वेशन xi है ना, तो इसका जो वेटेड वैल्यू है वो xi का स्क्वायर है, ऐसा बताया गया। समझा क्या, ये ऑब्जर्वेशन है, इसका वेटेड वैल्यू है। तो अगर आप न्यूमरेटर वाले पार्ट को ध्यान से देखोगे तो क्यूब बन जाएगा ना, मीन निकालने के लिए जाएंगे तो क्या बन जाएगा, xi का क्यूब, और ये क्या बन जाएगा, xi का स्क्वायर। बेसिकली हमारे ये जो ऑब्जर्वेशन है नेचुरल नंबर्स के ऊपर है, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का, सॉरी सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स ऊपर बन गया, तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 का स्क्वायर, और नीचे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स बन गया, नेचुरल नंबर्स n+1 to n+1/6 आएंगे। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर का एक n और एक n+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n इंटू n+1 बचेगा, तो ये 2 का 4 बन जाएगा, ये 6 ऊपर चला जाएगा, इधर 2n+1 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 बचेगा, n इंटू n+1, 3 ऊपर बच जाएगा, नीचे आपका 2 इंटू 2n+1 बचेगा, 2 इंटू 2n+1, सही है क्या। सो ऑप्शंस डी। क्वेश्चन नंबर 75। हाँ, आप इसे भी अभी के लिए लीव कर सकते हैं, ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस में मॉड नहीं है, हमारे सिलेबस में मॉड नहीं है। नेक्स्ट 76, ऑर्थो सेंटर फाइंड करने के लिए पूछा गया ट्रायंगल का क्या होगा, ये तो देखने के साथ समझ में आ रहा है। देखो एक्स वाई 0 है, अगर एक्स वाई 0 है तो ये दो लाइन का इक्वेशन है, कंबाइन इक्वेशन है, या तो x 0 होगा या तो y 0 होगा, ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस तो राइट एंगल बनाते हैं। अब राइट एंगल देखने के साथ हमें तो क्लिक कर जाना चाहिए कि हमारा ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होगा, जो दोनों लाइन का 90 डिग्री वाले जो लाइन होते हैं ना, उनकी ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ये तो ऑरिजिन हो गया, तीसरा लाइन का तो मुझे जरूरत भी नहीं पड़ा, चलो लिख लेता हूँ, दिया है तो ठीक है। ये तो x + y = 1 है, तो x एक्सिस पे भी 1 पे कट करेगा, y एक्सिस पे भी 1 पे कट करेगा, तो ऑर्थो सेंटर तो हमारा ऑरिजिन हो गया ना, जहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, सही है क्या, 0,0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। ओके, इन्फिनाइट
वाले जब भी लिमिट आते हैं ना, जिसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट होगा, इनफिनाइट बाय इनफिनाइट होगा, तो जो हायर डिग्री होता है उससे डिवाइड करना पड़ता है, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट। तो यहाँ पे क्या है, 2n प्लस 1 का स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6। अगर डिग्री मैच कर गया ऊपर और नीचे वाले जो भी पोलिनोमियल है ना, तो बस जो कॉफिशिएंट होते हैं n का, वो ही आपका आंसर होने वाला है। तो डिग्री तो मैच कर रहा है, 4 डिग्री पोलिनोमियल ऊपर भी है, 4 डिग्री पोलिनोमियल नीचे भी है, तो इसको तो सॉल्व करना ही नहीं था, ये तो सट्टा हो गया ना हमारा। तो क्लास का डिस्कस किया हुआ सट्टा है। यहाँ पे आपका क्या आंसर होना चाहिए था, जो कॉफिशिएंट होंगे दैट इज द आंसर, मींस 2 का स्क्वायर इंटू 4, 3 का क्यूब इंटू 2, तो एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8/27। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये तो सट्टा है, कॉफिशिएंट जो होंगे हायर डिग्री के वही आपका आंसर होगा। 78 यहाँ पे ऑप्शंस में एरर है, फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो 0/0 का फॉर्म है, उतना क्यों सोच रहे हो आप, एल हॉस्पिटल रूल लगा देना, एल हॉस्पिटल रूल लगा दोगे तो जो हमारा फंक्शंस बनेंगे, अब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, यहाँ पे सिंपल एफ ऑफ ए बनेगा न्यूमरेटर में, यहाँ पे ए टाइम्स ऑफ एफ डैश एक्स बनेगा, नीचे तुम्हारा 1 बनता, फिर एक्स के जगह पे ए पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे ऑप्शंस में थोड़ा सा चेंजेस होगा, तो बस अभी के लिए आंसर आप देख लो, एफ ऑफ ए एफ डैश ए आना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देखो, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सारे क्वेश्चन से इजी है, मतलब क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। आज के पेपर में 70 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए था आप लोगों का। A bag contains 6 white 2 black ball, एक बैग है जिसमें 6 white and 2 black ball है, and 4 ball are successfully drawn out and not replaced। मतलब 4 बॉल निकाला जा रहा है बट उसको रिप्लेस नहीं किया जा रहा है, 1 बाय 1 की बात किया जा रहा है। तो प्रूव दैट दे आर अल्टरनेटली ऑफ डिफरेंट कलर, इसने कंडीशंस लगा दिया, जो तुमने 4 बॉल निकाले हो ना, ये जो 4 बॉल, 4 का कलर जो आना चाहिए अल्टरनेट कलर आना चाहिए। तो अल्टरनेट कलर कैसे आ सकते हैं, पहले कॉम्बिनेशन समझ गए, 4 बॉल निकालने हैं, अल्टरनेट कलर का आना चाहिए, तो चलो तुम व्हाइट वाला बॉल आएगा तो दूसरा ब्लैक आना चाहिए, फिर व्हाइट फिर ब्लैक, एक कॉम्बिनेशन से ऐसा बनेगा। दूसरा ब्लैक से भी तो स्टार्ट हो सकता है, पहला ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, ठीक है, ऐसा हो गया। तो चलो देख लेते हैं, व्हाइट बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी टोटल 6 है 8, ब्लैक बॉल टोटल 2 है, और अब एक अब रिप्लेसमेंट नहीं है तो 8 में से एक बॉल चला गया तो 7 आएगा। व्हाइट निकालने का पहले 6 में से मैंने निकाल चुका हूँ, एक तो 5 बचेगा 6, और ब्लैक 1/6 ऐसा आ जाएगा। और जब आप इस केस को डील करोगे तो ये भी सेम ही आने वाला है, आगे पीछे टर्म्स होंगे आप देख लेना, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ पे 5 होना चाहिए, मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया लास्ट वाले पे लो, नीचे भी घट रहा है ना, रिप्लेसमेंट नहीं होगा ना, 1/5। ओके, तो यहाँ पे इंटू 2 भी है, 5 से 5 कैंसिल होगा, 6 से 6 कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2/28 मीन्स 1/14। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसका भी आ गया 79 80 पे आ जाते हैं। अर्थमेटिक मीन ऑफ 7 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग विद ए, मतलब जो आपका ऑब्जर्वेशन है ए से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से। तो जो मीन बताया गया इसका कितना आ गया, मीन m है। ये बोनस क्वेश्चन से देखो, अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो अब आपका न्यू ऑब्जर्वेशन है, न्यू की बात किया जा रहा है, वो आपका स्टार्टिंग हो रहा है a+2 से। तो सिंपल सा लॉजिक है, ये तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हो गया ना, अगर ऑब्जर्वेशंस बढ़ेगा तो मीन भी उसी रेशियो में बढ़ेगा, उसी रेट से बढ़ेगा, तो n+2 आ जाता है। क्लियर है, ये m है ना, हाँ m+2 आ जाता है। ठीक है, सो 80 का आंसर क्या आ जाएगा, m+2 भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y दे रखा है, निकालना है, गिवन डाटा के r निकालना है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरिएंस ऑफ xy अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x वेरिएट एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y वेरिएट। अब कोवेरिएंस ऑफ xy कैसे निकालते हैं, बस मैं फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो इसका जो फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ xy बाय n
अपॉन एक्स मीन वाई, ये आपका कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई हो गया। ठीक है, आपके पास सारी डाटा है, पहले आप मीन निकालो, क्योंकि मीन निकालोगे तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी यूज करोगे। मीन कैसे निकलेगा एक्स का? समेशन ऑफ एक्स अपॉन टोटल नंबर्स। तो सम ऑफ एक्स कितना है 40, 40/10 कितना हो जाएगा? अ, आप वाई मीन भी निकाल सकते हैं, समेशन ऑफ वाई बाय एन, 50/10 कितना आ जाएगा? 5। क्लियर है? तो कोवेरिएंस तो आप इजीली निकाल लिए। अब चलो पहले कोवेरिएंस ही निकाल लेते हैं। एक्स वाई का प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 220 दे रखा है, 220/10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 × 5, ये तो तुम्हारा 22 में से 20 गया तो 2 आ गया ना, तो कोवेरिएंस तो 2 आ गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकल के आता है? समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर बाय एन, एक्स मीन का स्क्वायर का रूट, ऐसे निकल के आएगा ना। ठीक, तो एक्स स्क्वायर 200 है बाय 10, मीन हमने 4 निकाला है, 4 का स्क्वायर 16, 20 में से 16 गया 4, ये 2 आ गया। इसी तरह से y निकालेंगे। अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, बस x की जगह पे y आ जाएगा। वाई स्क्वायर का वैल्यू 262 है, डिवाइडेड बाय 10 माइनस इसका मीन क्या था? 5, मतलब 5 का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25। जैसे वहां पे 4 था तो 4 का स्क्वायर आ जाता है। तो बेसिकली ये 1.2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1.2 आ रहा है। हमारे शाहरुख सर आए हैं। ठीक, मैंने सर को बोला नहीं। मैंने 30 मिनट में 20 क्वेश्चन सभी कंप्लीट करवाए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब 30 मिनट में सोचो, देखो मैं अभी 130 में आया था, 135 के बाद सेशन स्टार्ट हुआ, अभी 2 बज रहा है, 30 मिनट में 20 क्वेश्चन। हाँ, और जबकि मैं प्रॉपर सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप देख लो बच्चे लोग, आज का पेपर क्या है, बहुत ही आसान पेपर है। आज के पेपर में डिमोटिवेट नहीं होना है। जिसका मिस्टेक हुआ है, आप 1 to 1 आके टीचर से डिस्कस कीजिए, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हम देखेंगे, समझेंगे क्या हो सकता है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में एरर है तो उसको नहीं सोचना है। बहुत सारे क्वेश्चन सही है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते थे। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर पेपर में मिस्टेक था, तो मिस्टेक था तो तुम्हें छोड़ना चाहिए। हाँ ठीक है, ओके। 262 माइनस 50/10, ये आज आपका आ जाएगा 1.2 का स्क्वायर रूट। ओके, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करने के लिए आप पुट करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये सारे वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना आपका। अगर आप जब फॉर्मूला लगाओगे तो ऊपर भी 2 था, ये भी 2 था, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1.2 आ रहा है, ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, ऐसा होता है। अब आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, जो आंसर आएगा मैच करा लेगा। नेक्स्ट 82। अच्छा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इनइक्वालिटीज दिख रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि एम जेम लग सकता है यहाँ पे। तो एम तो हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है। तो एम कैसे निकालेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट का? दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, जीएम में तो प्रोडक्ट में चला जाएगा, और प्रोडक्ट का रूट जब लगेगा तो ये तो आर बन गया ना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बन गया क्या? तो ये क्या बन जाएगा? बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई, ऐसा बना एज। अच्छा, रेसिप्रोकल में आ रखा है, दिखा रखा है। तो इसको क्यों ना हम रेसिप्रोकल में ही सॉल्व करें, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल में आंसर चाहिए ना, तो वो ज्यादा आसान होगा। ऐसे कर सकते हैं, सही है। ये भी तो पॉजिटिव ही नंबर होगा ना, और जब आप इसका जीएम लेंगे तो 1/r बनेगा। अब आप क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया। तो इनइक्वालिटीज मुझे दिखा, तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे एमजीएम अप्लाई कर सकते हैं। आज के पेपर में अभी थर्ड क्वेश्चन मुझे दिखा जो एमजीएम से बन रहा था, और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 82 भी कंप्लीट हो गया हमारा। थैंक यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग 83। क्वेश्चन नंबर 83। क्या है क्वेश्चंस में? ए और बी टू इवेंट्स है, यूनियन 3/4 है, इंटरसेक्शन 1/4 है, ए कॉम्प्लीमेंट 2/3 है, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ए यूनियन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी जो होते हैं पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी होते हैं। ठीक है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। तो ए यूनियन बी हमारे पास 3/4 है, ये 1/4 है, ये हो जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। तो ये तो 1 बन गया, ये को इधर लेके आ जाओ, या पी ऑफ बी बन गया। और ये तो पी ऑफ बी क्या आ गया? ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया ना। पी ऑफ बी हमारा क्या निकल के आ गया? ए का कॉम्प्लीमेंट निकल के आ गया। और ए का कॉम्प्लीमेंट तो हमें दे रखा है, ए का कॉम्प्लीमेंट कितना है? 2/3। आंसर भी आपका क्या आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। क्लियर है? एटी थ्री का था। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 डिस्कस करते हैं। 84 में क्या है? ये जो क्वेश्चंस है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने लेआउट चेंज किया हूँ, तभी आपको बस सॉल्यूशंस दिखेगा। सेट ये डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ क्या फाइंड करना है। एरिया फाइंड करना है x-1 एंड y=1 से इनका एरिया निकालना है। तो आप y=x-1 का अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसे ग्राफ बनेगा? पॉजिटिव स्लोप है, और जब x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू 1 आएगा, और y का वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू 1 आएगा। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। अगर x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू -1 होगा, और y का वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू 1 आएगा। ये ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, हमने किसका ग्राफ बना लिया? y=x-1 का ग्राफ बना लिया। ठीक है, अब मॉड लगा हुआ है तो मॉड तो नेगेटिव नहीं होगा ना, ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट। ठीक है, अब y=1 है तो y=1 एक लाइन कहीं से पास करेगा, ये। तो मुझे ना ये एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। ठीक है, तो चलो इसको आप क्या करो, पॉइंट निकालो। ये तो पॉइंट आपका 0,0 हो जाएगा, 0,0 बोल रहा हूँ, 0,1 आ जाएगा। आपको बस ये पॉइंट ढूंढना है। मोहम्मद भाई ये थोड़ा लेआउट चेंज कीजिए ना, ये इधर चाहिए, ये इधर चाहिए। क्या हो रहा था, क्वेश्चन तभी नहीं दिख रहा था। तो हाँ हाँ, आवाज। ओके, तो अगर आप ये जो मार्क किया हो मैंने, ये पॉइंट ए मेंशन कर लेता हूँ। अगर ये निकालना चाहते हो तो ये तो y=1 वाले लाइन है, इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो y=1 x-1, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। हाँ, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1 है। हाँ, हाइट तो 1 यूनिट है ना, हाइट 1 यूनिट है, ट्रायंगल बन रहा है ना, बेस आपका 2 यूनिट है। सिंप्लीफाई करेंगे तो एरिया आपका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1 स्क्वायर यूनिट। 84 भी हो गया, 85।
85 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे क्या 0 से π/2 है, cos है 1 प्लस sin x 2 प्लस sin, है ना। अगर साइन को टी पकड़ेंगे तो cos x dx dt बन जाएगा। अगर आप साइन को टी पकड़ते हैं तो cos x dx हमारा क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा ना। तो cos x dx हमारा dt बन जाएगा। आप लिमिट भी चेंज कर सकते हैं, लिमिट भी चेंज कर सकते हैं। x वर्सेस t है, x 0 तो 0, π/2 तो 1। तो ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक चला गया, 0 से 1 पे चला गया, ये dt बन गया 1 प्लस टी एंड 2 प्लस टी। आपका दोनों लीनियर फैक्टर है तो लॉग में आएगा। बट लॉग में क्या आता है, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, जब दोनों लीनियर फैक्टर होंगे तो लॉग स्मॉलर वाले जो होते हैं ऊपर जाते हैं और बिगर वाले फैक्टर नीचे आता है। यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शंस की जैसे आप यूज कर सकते हैं। आप चलो मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। ये जो टर्म्स है ना, ये आप कैसे 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन 2 प्लस टी, आप सिंप्लीफाई कर लो तो आपको मिल जाएगा हमारा जो एक्सप्रेशन था, ओरिजिनल एक्सप्रेशन, फिर दोनों लॉग में चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा लिमिट क्या है 0 से 1, अपर लिमिट पुट करेंगे 1, 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा लॉग 2/3 आएगा, 0 पुट करेंगे लॉग 1/2 आएगा। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, लॉग का प्रॉपर्टी से डिविजन्स में चला जाएगा, तो डिविजन्स में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 4/3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 85। मीन मीडियन और मॉड का रिलेशन, एम्पिरिकल रिलेशन यूज करना था यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें पता है 3 मीडियन इक्वल टू क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू मॉड होता है ना। अब मीडियन आपको दे रखा है 26 है, 3 इंटू 26, मीन आपको पता है 20 है, तो हमें मॉड मिल गया 78 माइनस 40 तो 38। मॉड कितना आ गया 38। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87। A cricket league there are 10 teams. Team plays every other team twice. हर एक टीम 2 मैच खेलते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मैच कितने हो जाएंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ मैच प्लेड की बात किया जाएगा बिटवीन 2 टीम्स, टोटल नंबर ऑफ मैच प्लेड की बात किया जाएगा तो हर एक टीम 2 मैच खेलता है और मैच खेलने के लिए 2 टीम चाहिए, तो मैं सेलेक्ट कर लूंगा। ये कितना हो गया 90। टोटल मैच कितने होंगे 90। अब उसमें क्या बोला है कि हर एक वीक 6 मैच खेला जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है टोटल नंबर ऑफ वीक्स कितने आएंगे 6 से डिवाइड कर दो, 90/6 सही है क्या 88। ए इंटू एडजॉइंट ए, ये तो प्रॉपर्टीज है। ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स ऑफ आई। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 16 माइनस 6 10 आ जाएगा क्या, तो आपका क्या हो जाएगा 10i बन जाएगा। तो बेसिकली 10 0 0 10, ये तो ऑप्शन ए है ना 88 का ए। 89, ये तो क्या है 89 का रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2 AP दे रखा है। चलो जिन्हें नहीं पता है समझ के लो। 89 रेशियो ऑफ टर्म्स ऑफ 2 AP दे रखा है, मतलब यहाँ पे आप ऐसे समझ के लो, अगर 2 AP का सम का रेशियो दे रखा है SN1 अपॉन, ये पहले सट्टा लिख के दे रहा हूँ। अगर मुझे गिवन है, मान लो ये लीनियर फॉर्म में गिवन होगा और मुझे टर्म का रेशियो पूछा गया है, जैसे लाइक में कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू पे पूछा गया होगा, लाइक 20 टर्म्स में पूछा गया है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है जो n होता है ना उसको रिप्लेस करेंगे 2m-1। लाइक आप याद कर सकते हो और मल्टीपल से रिप्लेस करना है, मतलब n को किससे रिप्लेस करेंगे 2m-1 से। तो यहाँ पे 20 टर्म्स का रेशियो पूछा गया है, तो n तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 20-1 मीन्स आप 39 से रिप्लेस कर दीजिए तो आपको आंसर आ जाता है। मतलब तो अगर टर्म का रेशियो चाहिए ना मुझे 20 टर्म्स ऑफ फर्स्ट सीक्वेंस
20 टर्म्स ऑफ सेकंड एपी, इनका जो रेशियो चाहिए आपको, तो हमने क्या बताया आपको, क्या सप्लाई यूज करना चाहिए, -1 यूज करना चाहिए। तो 3 इंटू 39 माइनस 13, 5 इंटू 39 प्लस 21। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। ठीक, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन के सब बेसिक था। अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 5 चाहिए, हमें ध्यान रखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 5 निकालना है। आगे क्या दे रखा है, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस का स्क्वायर में। तो क्यों ना हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ऐसे करेंगे क्या, 1 प्लस एक्स की पावर 2 और ये बनेगा 1 माइनस एक्स की पावर -2, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो जब आप इनका एक्सपांशन करेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये नेगेटिव इंडेक्स का एक्सपांशन ये तो चलता रहेगा ना, तो इसका क्या बनता है, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x के पावर 4, हमें 5 तक जाना है तो 6x के पावर 5, ये बनेगा ना। अब आपको x के पावर 5 चाहिए, तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जिसके कोफिशिएंट 4 है, मतलब कोफिशिएंट 5 लेना पड़ेगा। और एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स एक्स क्यूब वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होंगे 1 इंटू, तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 5 निकल के आ गया, मतलब 6 प्लस 10 प्लस 4 मींस 20, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 5 आ गया। तो ये तो बाइनोमियल का सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसमें तुम्हें सिंप्लीफाई करके एक्सपांशंस करना था और फिर एक्सपांशंस को मल्टीप्लाई करना था। तो मैंने क्या किया, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का एक्सपांशन डायरेक्ट लिख लिया और फिर निगेटिव इंडेक्स के लिए एक्सपांशंस लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, 90 हो गया हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 91। The probability of ABC solving the problem 1/3, 1/4, 1/5, okay, respectively. If all three try to solve the problem simultaneously, then probability then exactly one of them solve the problem. मतलब तीनों में से किसी एक ही ने सॉल्व किया होगा, बाकी दो ने सॉल्व नहीं किया होगा, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे किया जा सकता है इसको सॉल्व। अगर ए ने सॉल्व किया होगा तो बी ने सॉल्व नहीं किया होगा, सी ने सॉल्व नहीं किया होगा, ऐसा है। अगर बी ने सॉल्व किया होगा तो ए सॉल्व नहीं करेगा और सी सॉल्व नहीं करेगा, और अगर ए और बी सॉल्व नहीं करेगा तो सी सॉल्व कर देगा। एग्जैक्टली वन का मतलब यही हुआ ना, तो हमें ये निकालना है। तो ए का सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो बी और सी सॉल्व नहीं करना चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे, 1/4 का कॉम्प्लीमेंट 3/4, 1/5 का कॉम्प्लीमेंट 4/5। ए का कॉम्प्लीमेंट 2/3, बी ने सॉल्व किया एज इट इज लेंगे, याद है आपका 4/5। ए का कॉम्प्लीमेंट 2/3, बी का कॉम्प्लीमेंट 3/4। यहाँ पे मैंने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, सी ने सॉल्व किया था तो सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, और सी ने सॉल्व किया तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/5। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाता है। तो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 1/5, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे बचा 2/15, 3 से 3 कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये बचा 1/10। तो ये तो 30 है इसका एलसीएम, तो 30 आएगा ना, 6 4 3, 13/30। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एग्जैक्टली वन का मतलब यही हुआ ना, ए ने सॉल्व किया, फिर बी ने सॉल्व किया, सी सॉल्व किया, 3 सिनेरियो बनेगा, मैंने सॉल्व कर दिया अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 92, एक्स डी वाई, ये जो y है ना, ऐसा करते मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वाई एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो ये क्या, इसको टू वाई स्क्वायर डी वाई। अब ये वाई स्क्वायर को अगर आप यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स वाई स्क्वायर, और इधर तो डी वाई है ना, तो ये बन जाएगा डी, अच्छा यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है? अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा बनेगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई
अपॉन वाई स्क्वायर माइनस डी वाई। तो ये जो बेसिकली टर्म्स है ना लेफ्ट साइड में, ये डी ऑफ एक्स बाय वाई, ठीक है, ये तो आपको माइनस डी वाई है, इंटीग्रेटिंग कर देंगे तो डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव है कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस डी। ओके, अब मुझे क्या बोला है कि y और 4:2 मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है, जब x 4 है तो y 2 है। इसका मीनिंग क्या होता है, जब x 4 है तो y 2 है। तो आप पुट कर देंगे ये दो वैल्यू एक्सप्रेशन में तो c निकल के आ जाएगा। तो 4/2 2 बनेगा -2 प्लस c, तो c का वैल्यू कितना निकल के आ गया यहाँ से हमारा, c का वैल्यू आपका निकल के आ गया 4। c का वैल्यू क्या निकल के आ गया 4। अब मुझे पूछा y ऑफ 3 क्या होगा, मतलब y ऑफ 3 का मतलब आप बताओ, जब x का वैल्यू 3 था तो y का वैल्यू क्या होगा। x का वैल्यू जब 3 था तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं y को इधर, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 3y, y का वैल्यू क्या बोला है कि 0 से हायर होना चाहिए, 3y माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो y का फैक्टर क्या है, y माइनस 3 y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y का तो दो वैल्यू आ गया यहाँ पे, y इक्वल टू 3 और 1। ऑप्शंस में तो 3 है ना सिर्फ, ऑप्शंस बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, आप उसको डिवाइड कर दो। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक स्टेप, अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए फार्मूला क्या होता है, e की पावर p dx, और p तो तुम्हारा y के कोफिशिएंट जो होता है उसी को p बोलते हो ना। तो जब आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो सिंपली मुझे क्या दिख रहा है, फंक्शंस का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो लॉग में चला जाएगा, ये बनेगा e के पावर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए जब भी आप निकालने के लिए जाओ ना, तो y के कोफिशिएंट में फंक्शंस का डेरिवेटिव अगर ऊपर दिखता है ना, तो यही आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, ये आपका पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 94, तो हमें डिग्री निकालना है, तो पावर फ्री फ्रॉम रेडिकल चाहिए, तो स्क्वायरिंग कर देंगे, तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ पे पहले से जो पावर है 2 था वो पहुंच जाएगा 4 पे, और ये फ्री फ्रॉम हो जाएगा 2 प्लस dy बाई dx। अब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है 3 है, उसकी पावर ही आपका डिग्री होगा, तो डिग्री आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 90, क्वेश्चन नंबर 95। 95 पूछा है कि ये क्वेश्चन किसको रिप्रेजेंट करता है, जो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, 2 डिग्री इक्वेशंस गिवन है, 2 डिग्री इक्वेशंस आपके पास गिवन है, तो यहाँ पे हमें पहले कंपेयर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ। ए एक्स स्क्वायर 2h(xy) प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशंस होता है, यहाँ से आप कंपेयर करके सारे वैल्यू निकाल लेंगे। बस कंडीशंस बता दे रहा हूँ, अगर अगर डेल्टा डेल्टा हमें निकालना पड़ता है, अगर डेल्टा सबसे पहले निकालेंगे कोफिशिएंट के यूज करके, अगर डेल्टा आपका 0 है तो आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमें और भी कंडीशन चेक करना पड़ता है। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे ब्रांचेस बनेगा, ब्रांचेस ऐसे समझना पड़ेगा। अगर एच स्क्वायर इक्वल टू, हाँ मतलब यहाँ पे डेल्टा अगर 0 है और एच अगर 0 है तो सर्कल बन जाएगा, ऐसा है। तो इक्वेशन सर्कल होना चाहिए, एच 0 होना चाहिए और ए और बी तुम्हारा सेम होना चाहिए, ऐसा होता है। दूसरा ब्रांच में इसे समझना पड़ेगा कि जो तुम्हारा एच स्क्वायर है ए बी के बराबर आ गया तो पैराबोला बन गया। अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी आ गया तो हमारा इलिप्स बन जाएगा, और अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आ गया तो आपका हाइपरबोला बन जाएगा। ये केसेस होते हैं,
पूरा कॉन्सेप्ट ही डिस्कस कर लिया गया यहाँ पे। तो अगर जब तुम कंपेयर करने के लिए जाओगे तो एच का वैल्यू तो तुम्हारा -1 आ जाएगा ना, 2h = -2 करेंगे तो इसका वैल्यू -1 आ जाएगा। ए भी 1 है, बी भी 1 है, तो h² = ए भी हो रहा है ना, डेल्टा आपका नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो ये आपका पैराबोला हो जाएगा। क्या आ जाएगा? पैराबोला आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 96। अब इलिप्स के इक्वेशंस में इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, तो इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशंस में राइट साइड का वैल्यू तो 1 होना चाहिए ना, यहाँ तो 1 नहीं है। आप क्या करो, कोई बात नहीं, यहाँ पे जो 2 - r है इसे रखेंगे, यहाँ पे y² r-5 है, -1 आया। अब आप क्या करेंगे कि ये निगेटिव को हटाने के लिए माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 2 - r है ना, इसको r-2 बना लेता हूँ मैं, सही है क्या? और ये जो r-5 है ना, इसको 5 - r बना लेता हूँ। अब ये 1 बन जाएगा, मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई कर दिया हूँ दोनों साइड। अब ये तो स्क्वायर है ना, ये तो सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ होता है, ए और बी की बात कर रहा हूँ, स्क्वायर है तो ए और बी तो कभी नेगेटिव नहीं होता है ना, मतलब अगर स्क्वायर के साथ भी कंपेयर करोगे ए भी नेगेटिव नहीं होता, तो उसका स्क्वायर कहाँ से नेगेटिव होगा? तो ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए ना, r-2 भी पॉजिटिव होना चाहिए, 5 - r भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो r-2 पॉजिटिव कब होगा? जब r का वैल्यू 2 से एक्सीड करेगा, और 5 - r पॉजिटिव कब होगा? जब r का वैल्यू 5 से लेसर होगा। तो ये इंटरसेक्शंस वाले केस हो गए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से निकल के आ रहा है, तो तुम्हारा r का वैल्यू क्या आना चाहिए? 2 से एक्सीड होगा और 5 से स्मॉलर होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97। हमें फंक्शन ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना है 1 से 4 में, तो ये पीस वाइज फंक्शन है, आप देख के बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डोमेन ब्रेक हो रहा है ना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 1 से 2 में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। 1 से 2 के लिए इंटीग्रेशन के लिए फंक्शन क्या है? 4x + 3। ठीक, 2 से 4 के लिए इंटीग्रेट करेंगे, 2 से 4 के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास? 3x + 4 है, सही है क्या? अब इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा 97 का। मतलब इंटीग्रेट करेंगे तो x² / 2 आएगा ना, तो ये 2x² बनेगा प्लस 3x 1 से 2, ये बनेगा 3x² / 2 प्लस 4x 2 से 4। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अपर लिमिट पुट करेंगे, 2 × 4 4 × 8 प्लस 6। लोअर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह पे 1 पुट कर देंगे, 2 प्लस 3। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, अपर लिमिट पुट करेंगे 24 एंड प्लस 16। लोअर लिमिट पुट करेंगे 6 प्लस 8। तो जब ओपन होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 50 - 6 34। ये क्या और सॉरी 40 - 5 आना चाहिए, 6 नहीं आना चाहिए। ये 3 + 2 + 3 5 होगा ना, तो 35 आ जाएगा। 35। ये तो 98 तो हमारे सकते हैं क्वेश्चंस यहाँ पे, तो थोड़ा सा यहाँ पे आई थिंक लिमिट में चेंजेस होना चाहिए था। लिमिट ऐसा होना चाहिए था आपका IN के लिए 0 to π/4 होना चाहिए, पाई नहीं होना चाहिए था। हाँ ठीक है, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था। तो फिर इनका जो रिडक्शन फॉर्मूला से जो रिजल्ट निकल के आता है ना, IN + IN - 2 जो निकल के आता है 1/(n - 1) आते हैं। ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब n की जगह पे 7 पुट कर दो, तो ऑलरेडी ये 5 बन जाएगा, और 1/7 - 1 1/6 बन जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा 98। हाँ 99। इफ द लाइन्स दिस एंड दिस आर डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो दोनों को सॉल्व कर लो, सेंटर मिल जाएगा, और रेडियस एरिया से निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या है, 2x - 3y = 5, 3x - 4 = 4y = 7 है। सॉल्व कैसे करेंगे? 4 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 8 - 9x 20 - 21। तो x का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 1 निकल के आ गया। अगर x का वैल्यू 1 है तो किसी भी क्वेश्चन पे आप पुट कर दो, 2 -
3y इक्वल्स टू 5। तो माइनस ऑफ 3y इक्वल्स टू 3, तो y का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, -1। हमें मिल गया सेंटर। अब रेडियस के लिए एरिया यूज कर लेते हैं। एरिया 154 स्क्वायर यूनिट है, ठीक है। तो एरिया पाई, पाई का वैल्यू रख लेते हैं 22/7, 22/7, आर स्क्वायर 154 है। सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154। एक्चुअली ये 154 क्या होगा, 14 इंटू 11 होंगे, ओके, इंटू 7/22। तो ये 2 बना, ये 7 बना, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब आपको सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, तो x - 1 का स्क्वायर, y + 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 49। x - 1 और y + 1 ऑप्शन से, ठीक है। हमारा क्वेश्चन सब 100 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 100। The equations of line perpendicular to the line and pass through the point B, ये बोल रखा है। थोड़ा सा इसको आप चेंज करके लिख सकते हो, जैसे लाइक px, ठीक है ना। इसका स्लोप निकाल लो, उतना क्यों कर रहे हो। जो ये जो लाइन दे रखा है y/b = 1, तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x अपन कोएफिशिएंट ऑफ y नेगेटिव आएगा, तो ये b/a आ गया। तो इसका परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो इसका स्लोप m' ले लेंगे, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल आ जाएगा। अब लाइन कहाँ से पास कर रहा है, bA से पास कर रहा है, तो y - a माइनस a/b x - b। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y - a/a माइनस x - b/b। तो ये बनेगा y/a -1 माइनस x/b माइनस माइनस +1। अब ये इधर ऐड हो जाएगा, x/b y/a, ये 2 बन जाएगा, सही है। तो x/b होना चाहिए, y/a होना चाहिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 100 भी खत्म हो गया हमारा। 101 101 ABC आर द 3 नॉन जीरो वेक्टर, B 9C है, A - 3C है, द एंगल बिटवीन A एंड B पूछा गया है, क्या होगा। एंगल बिटवीन A एंड B, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला लगा लेते हैं, कोई भी लगा सकते हैं, बट साइन थीटा का मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो साइन थीटा का फॉर्मूला अगर आप लगाते हो, ये मतलब एंगल तो यहाँ पे उतना मुझे सोचना ही नहीं चाहिए, साइन थीटा क्यों लगाना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर है ना, ए का जो डायरेक्शन है -c की तरफ है, c मान लो x एक्सिस ऐसे समझ के लो। मतलब ए क्या है आपका, ए वेक्टर क्या है, -3c है। मैग्नीट्यूड अलग अलग है ना, तो मैग्नीट्यूड अलग अलग है, बट डायरेक्शन से देख सकते हैं ना एंगल। और बी तुम्हारा क्या है, यहाँ पे 9c है, तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 180 है ना। ये तो सॉल्व भी नहीं करना था, थीटा इज 180। एंटी पैरेलल है ना दोनों वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 102। अब एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो इन दोनों वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसको एक को ए पकड़ो, एक को बी पकड़ो। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला निकालना चाहते हो तो ये प्लस माइनस भी होगा, ए क्रॉस बी, फिर इनके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करते हैं। ये यूनिट वेक्टर ऑफ निकल के आ जाएंगे। अब ए को मैंने 2i + 3j - k पकड़ा हूँ, बी को 3i - j + 5k पकड़ा हूँ, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट पहले निकालना पड़ेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे हम, डिटर्मिनेंट से निकाल लेंगे। i j k 2 3 -1 3 -1 5। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 15 - 1 14i, 10 + 3 13 -13j, -2 -6 -8, सॉरी 11, नॉट 8 -11 की आ गया क्या। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, तो 9√6 आएंगे। अब आप ऑप्शंस में देख लीजिए, 14 13 11, 14 - 13 -11, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 102 103
अब राइट एंगल की बात किया है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो dr का प्रोडक्ट का सम 0 आएगा। तो फर्स्ट लाइन का dr -3 है, सेकंड लाइन का dr देखिए a1 a2 है, b1 b2 करेंगे और c1 c2 करेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। 2 × -5 = 0, माइनस ऑफ 9k + 2k = 10, so k = -10/7, option B is the correct answer. 103. 104 पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है। तो dy बाई dx निकालना है, तो पहले dx बाई dt निकाल लेते हैं, फिर dy बाई dt निकालेंगे। dy बाई dt ही पहले निकाल लेते हैं, अगर dy बाई dx निकालना है तो डायरेक्ट में लिखने का ट्राई करूंगा। तो ये dy बाई dt आपका ऊपर में होना चाहिए और dx बाई dt आपका नीचे होना चाहिए। तो y वाले टर्म को जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे t sin t पे जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये बनेगा sin t, ये बन जाएगा -sin t। जब dx बाई dt करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये बन जाएगा -t sin t + cos t -sin t, सॉरी नॉट sin cos। अब आप कैंसिलेशन कर लीजिए, cos से cos कैंसिल, sin से sin कैंसिल, a से a कैंसिल, t से t कैंसिल, ये -cos t आ जाता है, क्या आ जाता है -cos t। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 105 डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की बात कर रहा है, ये सिलेबस में नहीं है बट यहाँ पे अगर किसी को जानना है तो समझ सकते हो। पार्शियल में क्या होता है कि जैसे आप px का मतलब डेरिवेटिव तो करो, फंक्शंस का मतलब डेरिवेटिव तो करो, लाइक डी ऑफ px तो करेंगे। ये पार्शियल कोएफिशिएंट की बात कर रहा है, मतलब p ऑफ x का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव हम करेंगे फंक्शंस का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, टेकिंग y एज ए कांस्टेंट, ऐसा होता है। और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y का मतलब होता है कि हम डिफरेंशिएशन तो करेंगे फंक्शंस का विद रिस्पेक्ट टू y, टेकिंग x एज ए कांस्टेंट। ऐसा क्वेश्चन है बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। 106 ये 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, हर एक टर्म्स में मुझे क्या दिख रहा है, इवन मल्टीपल है, तो क्यों ना हम 2 का स्क्वायर कॉमन निकाल लें। ये बनेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू 15 का स्क्वायर। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स बन गया क्या, तो 15 टर्म्स है, n n+1 2n+1/6। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये तो 3 से जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 8, क्या बन जाएगा 32 × 31 × 5। ओके, तो 32 × 31 आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 32 992 आ गया। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 4960, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, यहाँ पे तो सिंपल सा इनवर्स का डिफरेंशिएशन पूछा गया है। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 - √x²। तो यहाँ पे जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खुल जाएगा, x³ अंदर बनेगा, फिर रूट का डिफरेंशिएशन होगा 1/2√x³, फिर x³ का डिफरेंशिएशन 3x²। ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3/2 तो हमारा नंबर है ना, x³ का मतलब क्या होता है, x√x होता है, x√x होता है, तो एक x कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर √x बनेगा और नीचे बन जाएगा 1 - x³। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर 107। 108 की बात कर लिया जाए, लॉग है, हमें डिवाइड बाई dx पूछा गया एट पॉइंट 1 और 2। ठीक है, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, टाइप कर रहा हूँ x+1 फिर 1 प्लस डिवाइड बाई dx। अच्छा ध्यान से सुनना, इस टाइप के क्वेश्चंस पे ना आप सिंप्लीफाई मत करो। आपको जब पॉइंट दे रखा है, इसको पर्टिकुलर फंक्शंस बोलते हैं ना, आपको इंडिकेटेड पॉइंट दे रखा है तो वैल्यू पुट कर दो, नंबर ही चाहिए ना आपको। ठीक है, अब मुझे पूछा गया कि आपको जो डेरिवेटिव है 1 और 2 पे निकालना, मतलब x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है, तो जब आप पुट करेंगे तो ये बनेगा 1/3, 1 प्लस dy बाय
dx। इधर बनेगा x तो 1 ही है ना, डिवाइड बाई dx प्लस 3 भी आप मल्टीप्लाई कर दो इधर, 1 प्लस डिवाइड बाई dx 6 टाइम्स ऑफ डिवाइड बाई dx प्लस 12। तो ये क्या बन जाएगा, -11/5। मतलब डिवाइड बाई dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 12 इधर जाएगा, -11/5। ऑप्शन बी। Let PQR be the non-zero pairwise distinct real numbers। अच्छा सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 है, अच्छा हैज इक्वल रूट्स बोला है, तो सम ऑफ कोएफिशिएंट अगर 0 है, ये तो हमारा सकता है ना, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है ना, तो जो रूट्स होंगे एक रूट्स 1 आएंगे और दूसरा रूट c बाई a आएंगे, ऐसा होगा। लेकिन इसने क्या किया, जो रूट्स भी इक्वल बोल दिया, तो मतलब जो अल्फा है वही बीटा है, मतलब एक रूट्स तो 1 था ही, अब इक्वल रूट्स होने की वजह से बीटा भी 1 हो गया, तो c इक्वल टू a आ जाएगा। मतलब कि c इक्वल टू क्या आना चाहिए, a आना चाहिए। तो c इक्वल टू a आएगा तो 1/p माइनस 1/q इक्वल टू 1/q माइनस 1/r। तो 1/p प्लस 1/r इक्वल टू 2/q। मीन्स ये एपी में है तो इसका उल्टा एचपी में होगा ना, पी क्यू आर आर इन एचपी। तो ऑप्शन सी आ जाएंगे 110। ये कुछ दिन बच्चे को पहले भी समझाया था कि क्वेश्चन को कैसे डील करना चाहिए। देखो आपको फंक्शन ऑफ जी ऑफ 3 चाहिए ना, तो देखो पहले आप जी ऑफ 3 निकाल लो ना, जी ऑफ 3 का जो भी वैल्यू निकल के आएगा फंक्शन में पुट कर देना। जी ऑफ एक्स क्या है तुम्हारा, एक्स प्लस 3 है, एक्स के जगह पे 3 डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो अब ये हमारा क्या बन गया, क्वेश्चन फंक्शन ऑफ 6 बन गया ना। और फंक्शन ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, x²/2 है। अब आप एक्स के जगह पे 6 डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, 36 + 2 38। कितना सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन बी। ट्रिपल वन पी क्यू आर दे रखा है, इक्वेशंस ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर पूछा गया है, क्या होगा। मतलब जो क्यू से बाइसेक्टर होगा उनके इक्वेशंस पूछा गया है, क्या होगा। क्यू तो ओरिजिन है ना आपका, 0,0 दे रखा है, पी एन आर दे रखा है -1,0 एंड आर आपका है 3,3√3। ठीक है, तो आप ये लेंथ निकाल लो। ठीक, तो पी क्यू का लेंथ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, क्यू आर का लेंथ निकाल लेंगे। क्यू आर का लेंथ कैसे निकल के आएगा, 3 का स्क्वायर 9 36, ये 6 आ जाएगा। तो हमें एक बाइसेक्टर पूछा गया, ये मैंने लेंथ निकाल लिया डिस्टेंस फॉर्मूला से, हमें बाइसेक्टर पूछा गया है जो क्यू से ड्रॉ किया गया है ऐसा। तो ये और ये सेम रेशियो में डिवाइड होता है, तो मतलब तो ये आपका 1 होंगे और ये आपका 6 होंगे। मतलब ये जो है ना पॉइंट, इसको m ले लेता हूँ, जो पॉइंट m है ना, पी आर को 1:6 में डिवाइड कर रहा है, तो m का कोऑर्डिनेट निकाल लें क्या, m का कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला से निकल के आ जाएगा। चलो थोड़ा टाइम के लिए इसको मैंने x, y ले लिया, तो x क्या निकल के आएगा, 3 × 1 + 6 × -1 -6 बन जाएगा बाय 7, ये -3/7 हो गया। y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे 1 × 3√3, बाकी तो 6 × 0 तो 0 ही बनेगा ना, बाय 7। ओके, अब आपको पॉइंट मिल गया, तो इक्वेशंस कैसे निकल के आएंगे, पहले तो स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप स्लोप कैसे निकल के आएगा, y/x यहाँ पे डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, तो y/x करेंगे तो -√3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -√3। इक्वेशन तो ये आ गया, y इक्वल टू जब ओरिजिन से पास करता है तो mx ही आता है ना, y इक्वल टू -√3x आ जाएगा। अब इसको आप एक साइड लेके आ जाओ तो आंसर क्या आ जाएगा, √x + y इक्वल टू 0, ऑप्शन सी। अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे समझना था एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होते हैं। यहाँ पे मैंने दिखाया हूँ, पहले लेंथ निकाल लिया, ये लेंथ निकाला, पी क्यू का लेंथ निकाला, क्यू आर का लेंथ निकाला, और फिर उनका रेशियो नीचे बेस पे रख दिया मैंने, और फिर सेक्शन फॉर्मूला लगा के कोऑर्डिनेट निकाल दिया मैंने। 112 फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है 2 log बेस dx दे रखा है, ऐसा दे रखा है ना।
तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो a के पावर x वाले रूल से डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका। log 2, फिर log का डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल से 1/x log 3, ऐसा बन जाएगा। अब हमें पूछा गया डेरिवेटिव 16 पे निकालो, तो x की जगह पे 16 पुट कर देंगे। ये पावर में log 3 16 और ये log 2 by log 3 into 1/16। तो यहाँ पे ऑप्शंस मैच नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अगर साइक्लिक रूल अप्लाई भी करूंगा तो वो सॉर्ट नहीं हो पा रहा है हमारा। ठीक, 113 एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्म बाय द लाइन पूछा गया है, क्या होंगे। तो आपके पास 4 लाइन है, मतलब 3x प्लस 4y प्लस 5 एक लाइन है। दूसरा लाइन आपका यहाँ पे हम लिख लेंगे 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। एक सेकेंड, बाकी 2 लाइन भी आप लिख लेंगे, दोनों पैरेलल लाइन है आपके। 2 लाइन आपके ऐसे होंगे, एक लाइन इधर एक लाइन इधर होंगे। ये ऐसे आएंगे 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और ये होंगे 3x 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो आप ये डिस्टेंस निकाल लो पैरेलल लाइन से, d1 मेंशन कर लेता हूँ और इसको हम इधर से d2 मेंशन कर लेते हैं। दोनों लाइन का बीच का डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अगर 2 पैरेलल लाइन है तो c1 माइनस c2 या c2 माइनस c1 मॉड में रखना पड़ता है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ता है, ऐसा रहता है। उससे भी आसान तरीके हैं, मतलब थोड़ा टाइम के लिए हम इसको पैरेललोग्राम्स के जैसे ट्रीट करेंगे। तो पैरेललोग्राम के जैसे ट्रीट करेंगे ना, हाँ मतलब वही होता है, जैसे ये जो दोनों का डिस्टेंस है ना, इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा तो ये 10 आ जाएगा। इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो ये भी आपका 10 आ जाएगा। और नीचे ये कुछ दिन अच्छा यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज दे रखा है। एक तो तरीका ऐसा है कि तुम कोऑर्डिनेट निकाल के सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, इस क्वेश्चंस का शॉर्टकट देखना पड़ेगा, तो उसको लेटर बाद में डिस्कस करते हैं। 114 पॉइंट्स दे रखा है, पूछा है ट्रायंगल्स का नेचर क्या होगा। तो यहाँ पे तो आपके पास कुछ ऑप्शन ऐसा दिख नहीं रहा है, आप डिस्टेंस निकाल लो। तीनों डिस्टेंस अगर सेम आए हैं, मतलब तीनों साइड का, तो इक्विलेटरल हो गया। तो निकाल लेते हैं। ए हमारा क्या है 1/√3 1। बी हमारा क्या हो जाएगा 2/√3 और 2, और सी हमारा आ जाएगा 1/√3 और ओके। ए भी निकालेंगे। ए भी कैसे निकालेंगे, बी माइनस ए का, सॉरी x2 माइनस x1 का स्क्वायर करेंगे, 2√3 में से 1√3 की सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा 1/3 प्लस 1, ये आपका बन जाएगा 4/3 का रूट। जब आप BC निकालेंगे तो BC भी इसी तरह सॉल्व होगा, 2√3 1/3 प्लस 1। तो ये तो दो साइड तो तुम्हारा सेम आ गया। अब हम AC निकालेंगे, AC निकाल सॉरी ए बी BC हो गया, हाँ AC निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। तो दो साइड तुम्हारा सेम है, दो साइड आपका सेम है ना, तो इक्विलेटरल तो नहीं होगा आपका, इक्विलेटरल नहीं होगा। हाँ, तो ऐसे स्क्लेश ट्रायंगल होंगे दो साइड्स इक्वल होने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 115।
तो यहाँ पे डेरिवेटिव होना चाहिए, वहाँ पे डायरेक्ट लग रहा है -10 दे दिया है क्या फंक्शंस में। हाँ, डेरिवेटिव होना चाहिए, फंक्शंस का डेरिवेटिव पूछा गया है कि -10 पे क्या होगा। तो ये फंक्शंस है ना, x-3 का मॉड, x+2 का मॉड और x-7 का मॉड। तो अगर डायरेक्ट पूछा जाता तो फिर तो आसान हो जाता, ऑप्शंस में 10 जाके पुट कर देंगे, पॉजिटिव ही आंसर आता। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला कि डेरिवेटिव पूछा गया है एट x=10 -10। तो यहाँ पे आपको मॉड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो मॉड को जब ब्रेक करेंगे, -10 जो इंडिकेटेड पॉइंट है, उस पॉइंट पे जो मॉड आएंगे उसके अकॉर्डिंग ओपन करना पड़ेगा। -10 पे ये मॉड नेगेटिव खुलेगा, ये भी मॉड आपका नेगेटिव खुलेगा और ये भी मॉड आपका नेगेटिव खुलेगा। तो ये क्या बन जाएगा, -3x और 7×10 8। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो -3 आएगा ना, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो किसी भी पॉइंट पे निकालो तो -3 ही आने वाला था ना। तो अगर प्लस अब -10 निकालेंगे तो -3 आता, ऑप्शन सी 116। तो यहाँ पे क्या है कि एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इनक्लोज्ड बाय द कर्व, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला कर्व है, एक आपका y=x वाले कर्व है और एक x=e वाले लाइन है। ये पॉइंट 1,1 हो गया, तो e का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो लाइन कहीं इधर से जा रहा होगा, ऐसा हो गया। एंड x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस, तो मुझे ये एरिया निकालना है x=, तो मैं क्या करता हूँ, रीजन ब्रेक कर लेता हूँ, दो पार्ट। सही है, एक ट्रायंगल बन गया, बेस भी 1 हाइट भी 1। इसका एरिया तो सिंपल है, अगर ट्रायंगल इसको सेक्शन 1 बोल देता हूँ, इसका 2, तो एरिया ऑफ 1 तो हमारा क्या आ जाएगा, हाफ बेस हाइट करेंगे तो हाफ आ जाएगा ना, बेस भी 1 हाइट भी 1, तो हाफ आ जाएगा। सेक्शन 2 के लिए एरिया निकालेंगे, जिसमें 1/x है, 1/x को इंटीग्रेट कर रहे हैं हम 1 से लेके e तक, x का लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट e है। इस डोमेन के लिए आप इसको इंटीग्रेट कर लो, तो एरिया ऑफ 2 मिल जाएगा। तो 1/x तो log x बनेगा, ln x बनेगा, अपर लिमिट पुट करेंगे 1 आएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, नेट एरिया रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, दोनों का एडिशन 3/2 आ जाएगा, 3/2 यूनिट स्क्वायर 117। तो ये तो हमारा सट्टा है ना, ए बी सी का स्क्वायर, बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। प्रोडक्ट में होगा तो बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर, एडिशंस में होगा तो हमारा क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ एबीसी बनेगा, मतलब 2 पेयर ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, ऐसा होगा, साइक्लिक में लिखना चाहिए। और सब्ट्रैक्शंस में होगा तो 0 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी आ गया, क्वेश्चन नंबर 118। कॉमन कॉर्ड जब भी निकालने के लिए पूछा जाता है तो दोनों कर्व को सब्ट्रैक्ट कर लो, s1 - s2 = 0। दो कर्व दे रखा है, सर्कल है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x² y² कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकंड में से फर्स्ट कर रहा हूँ, 6x - 4x 2x आएगा, 2y, उधर y वाले टर्म्स तो है ही नहीं हमारे पास, इधर फिर 3 - 1 2 आएगा। अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x + y + 1 = 0, तो ऑप्शन सी आ जाएंगे। 119 मीन डिविजन स्टैंडर्ड डिविजन का रिलेशन पूछा गया है, तो ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए। दो क्वेश्चंस बाकी है, तो हाँ, तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लेते इसको। तो ये मैंने क्या बोला, जो रिलेशन अभी समझा है ना, हमें स्टैंडर्ड डिविजन चाहिए। सो स्टैंडर्ड डिविजन बाय मीन डिविजन क्या होता है हमारा, 4/5 होता है। तो हमें अगर स्टैंडर्ड डिविजन निकालना है तो 5 टाइम्स ऑफ मीन डिविजन कितना था, 36 था ना, एंड इट्स 4, ये 9 आ जाएगा, 9 5 जा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, एबीसी जीपी में है, तो पूछा गया है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो अगर एबीसी जीपी में है तो आप बी को क्या लिख सकते हैं, ए आर लिख सकते हैं, बी को हम ए आर लिख सकते हैं ना।
सी को क्या लिखेंगे, ए आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप पुट कर दो तो ये आर स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर के साथ हमारे यहाँ पे ए स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। सी इक्वल टू बी आर बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा टर्म्स, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस आर स्क्वायर, ऐसा बचेगा। तब यहाँ पे जाएंगे तो सी को हम क्या बोला, ए आर स्क्वायर लिखने के लिए। अब ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस आर के पावर 4 बचेगा। आप नंबर्स लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा जनरलाइज वे में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। मतलब बी इक्वल टू हमने क्या बोला, ए आर है, और सी इक्वल टू हमने क्या बोला, बी आर है। तो ये बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर को मैंने क्या बोला, बी आर है, तो ये बी स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। सी को मैंने बी आर बोला हूँ और इसको ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए अपन बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बी अपन ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ऐसा बनेगा। तो ए अपन बी स्क्वायर, बी अपन ए स्क्वायर हमारा बनेंगे। तो ए, अगर आप यहाँ पे तो वैल्यू पूछा है किसके इक्विवेलेंट होंगे, तो ये तो ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे। करेंगे ना, इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब कर लेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, ऐसा। तो अब आप देख लो क्या सही होगा यहाँ पे। तो ये हमारा 120 क्वेश्चन हो गया सेट ए का कंप्लीट। थैंक यू।
4 बजे 20 मिनट बाकी है। तो ठीक है, मैं और हल्का कर लेते, फिर आप ज्वाइन करना सीधा। दोनों को डायरेक्ट स्क्रीन और ठीक है। याच्यावरती करतो डायरेक्ट, तर तो चालत कारण की माझं सॉल्विंग नाही आहे, मी थोडं मला हे करतोय मी रिव्हिजन